Okay, so coming back to our point, ठीक है, we were discussing about interviews, right? तो interviews के बारे में बात करते हुए सबसे पहले let's talk about a few points which we must remember whenever we go for an interview. ठीक है, तो I'm sure everybody has something to say on this because everybody has faced some interviews in their lives. So as per your experiences, what can you share with everyone? What should one do? What should one not do while going for an interview? Who would like to go with the question? कौन अपने experiences share करना चाहेगा? Anybody? Please participate, everyone. It's very important that everyone participates. उसी में मजा आता है यार. Oh, hi Dudum, hi. I would like to share my experience, my interview experience. Right. I mean, yeah, at first I used to get very nervous and I just made many mistakes. Like Hmm. if I didn't know any question, but I still tried to answer them, which was not correct. I mean, with the passing time, it got improved, and you just need to be honest. If you don't know any question, you just clarify that thing, and meanwhile you also eager to learn that thing if you don't know anything. You know, also, you just need to be confident and just trust yourself. You just don't if you get nervous, so then you will definitely forget that thing which you already know. I mean so that Hmm. comes with the if you have given many interviews, so that confidence automatically get built up. So that Hmm. was the main thing I got learned. Yeah. Right. Absolutely. I second to it. That first, one should not be very nervous. I mean, it's okay to feel some butterflies. You know, even if it's you are very experienced. Then also when the name interview comes, like even if it's a normal chat with the other person, ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि you just have to go and meet the other person and you just have to talk to that person, तो आप इतने नर्वस नहीं फील करोगे. ठीक है, बात ही तो करनी, इवन इफ यू नो दैट इट्स फॉर द जॉब, बट अगर आपको वो पुट अक्रॉस इस तरीके से किया जाए कि भाई इट्स you just have to go for a meeting with the person, अगर उस चीज को, उस इवेंट को अगर सिंपल मीटिंग बोल दिया जाए तो यू फील डिफरेंटली. और अगर उसी इवेंट को एक इंटरव्यू का नाम दे दिया जाए, इवन इफ इट्स नॉट गोइंग टू बी टेक्निकल ऑल्सो, even if you know in advance that it's not going to be technical, it's going to be something like knowing each other. तो अगर हम आपस में एक मीटिंग कर रहे हैं where the other party wants to know you before hiring you, right? तो वो आपको इतना मतलब you will not feel anxious around it, but still you will have a little bit of butterflies, maybe because maybe you want the job. And whenever we want something, um, we start thinking, our mind is uh, I don't know, wired in such a way that, or we have conditioned it by applying this thing again and again in such a manner that whenever we want something, एक जब एक चीज को लेकर के हमारा डिजायर आता है तो उसके साथ साथ उसको लूज करने का फेयर भी आ जाता है. तो अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो यू हैव दैट डिजायर टू गेट द जॉब and you feel qualified and well deserving for it as well, but still a fear of not being able to clear the interview or not being able to get the job also comes in, which causes the nervousness, right? कि चाहिए आपको कोई चीज तो वो कहीं हाथ से निकल ना जाए, वो जो एक फेयर होता है ना हमारा, वो ही हमसे फिर
जो है ना वो मिस्टेक्स करवाता है। एंड अगर उसी इवेंट को अगर हम सिंपल एक मीटिंग का नेम दे देंगे तो फिर इतनी एंजाइटी कॉज नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर इंटरव्यू बोल दिया जाता है उसको, तो मतलब समथिंग ट्रिगर्स इन आवर माइंड, एंड वो सारी एंजाइटी और नर्वसनेस आ जाती है। ठीक है, ऐसा होता है आपके साथ? कैन यू रिलेट विद व्हाट आई एम सेइंग? एब्सोल्युटली राइट। तो सबसे पहले तो मतलब एज फार एज मतलब, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में मोर देन द क्वेश्चंस पार्ट, मतलब ठीक है, क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड होना is one thing which we need to do, which we must do। ठीक है, कभी भी कोई इंटरव्यू देने हम जा रहे हैं तो वी मस्ट गो विद प्रिपेयर्ड माइंडसेट कि क्या आगे से हमसे पूछा जा सकता है, एंड accordingly we should be prepared for it। That is absolutely of no doubt, but more than that I think uh, एक एक सेकंड होल्ड करना जरा। Yes. So, as I was saying, कि we have a lot of questions to deal with, right? Generic questions, personal questions, technical questions, बहुत सारे questions generally मतलब commonly पूछे जाते हैं. So we can be well prepared for those questions, right? But more than being prepared for those questions, I think what is more important to be comfortable with this concept of interviews, राइट? क्योंकि अगर आपको दो क्वेश्चन के आंसर नहीं भी आते, still you can nail the interview if you are approaching the interview with a calm and composed mind। ठीक है, एंड मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब मुझे पता होता था कि आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, ठीक है, ये मेरे साथ होता है, ठीक है। कि जब मुझे पता होता है कि आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन द जॉब, आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सामने से आ गई है तो आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग इट, एंड फिर बाद में देखूंगी कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो मतलब आई एम नॉट वेरी कीन और वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट और जॉब। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को इंटरव्यू के लिए जाना है, अ, मैंने इंटरव्यू दिया है तो मतलब आई एम ऑन अनदर लेवल। आई मीन आई एम टॉकिंग एज इफ यू नो नोबडी कैन टेल कि कौन इंटरव्यू ले रहा है, कौन इंटरव्यू दे रहा है, मतलब इट इज सो सुपर कॉन्फिडेंट, एंड इट्स लाइक यू नो मतलब बहुत I'm just enjoying it to the fullest because I don't have any fear of losing anything in the process, because I'm not very keen on having the job। मिल अगर हो जाता है तब भी मेरे को सोचना है कि is it better than what I'm doing right now or not, I have to go for it or not। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा I'm आई एम रनिंग आफ्टर इट। तो इट्स लाइक ठीक है, आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग। तो जब मैं एक्सप्लोरिंग वाले एटीट्यूड के साथ व्हेन आई एम अप्रोचिंग एन इंटरव्यू, तो वो बहुत ही सही निकलता है। मतलब इट इज सो सो सुपर कॉन्फिडेंट दैट आई एम एंजॉयिंग, एंड आई
क्लियर इट, फॉर श्योर आई क्लियर इट, बिकॉज मैं ही श्योर नहीं थी कि मेरे को चाहिए भी कि वो जॉब की नहीं चाहिए, ठीक है। तो हर बारी वो क्लियर हो ही जाता है। एंड व्हेन आई वांट अ जॉब, ठीक है, जब मुझे कोई असाइनमेंट या कोई जॉब चाहिए, एंड देन आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, and tab I'm a little bit cautious. I'm not that free, which I was when I did not have the fear to lose anything. तब मैं बहुत फ्री फील कर रही थी and I was super enjoying it. But when I want that job, then I'm a little cautious of what I'm saying, and therefore a little nervous as well. So I felt that nervousness when I had that fear कि मेरे को ये चाहिए, ठीक है, तो कहीं नहीं हुआ तो वो फेयर की वजह से, मतलब इसलिए नहीं कि मेरे को टेक्निकल ग्राउंड्स पे या जो भी मेरे से क्वेश्चनिंग पूछे गए मुझे कुछ आता नहीं था, बट इट वाज मोर अबाउट माय कॉन्फिडेंस दैट आई एम शेयरिंग हियर, राइट। सो माय कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी नेचुरली वेरी नाइस एंड हाई when I don't have that fear of losing anything, but I get a little cautious, and मतलब वो बोलते हैं ना बैक फुट पे खेलना, एक होता है फ्रंट फुट पे खेलना, ठीक है आउट हो गए तो देखी जाएगी, तो दो दो बॉल आउट ऑफ बाउंड्री भी चली जाती है, वो वाला एक अप्रोच होता है, एकदम फ्री अप्रोच होता है व्हेन वी डोंट हैव एनी फियर ऑफ लूजिंग एनीथिंग, बट व्हेन वी गेट दैट फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, हम बैकफुट हो जाते हैं, डिफेंसिव खेलने की कोशिश करते हैं कि भाई यू नो विकेट पे रहना है, आउट नहीं होना। तो आउट नहीं होना के चक्कर में हम आउट हो जाते हैं, और जब हमारे पास आउट होने का फियर ही नहीं होता, तो हम वी प्ले सो फ्रीली कि आउट ऑफ बाउंड्री हमारी बॉल चली जाती है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारी एक जनरल प्रॉब्लम है, लाइफ की हमारी प्रॉब्लम है। मतलब आप ये प्रॉब्लम से अगर हम ओवरकम कर पाए तो हम बहुत फ्रीली वी कैन अप्रोच थिंग्स, मतलब कोई भी लाइफ में कोई भी प्रोजेक्ट है, कुछ भी आता है, तो जब भी हम फेयरफुल होके, फेयर ऑफ लूजिंग, फेयर ऑफ फेलियर, ये सब थॉट्स के साथ जब भी हम उस चीज को अप्रोच करते हैं, तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी, मतलब बिकॉज हम अपने आप को इतना प्रेशराइज कर रहे होते हैं उस सिचुएशन में कि हमसे कुछ गलती ना हो जाए, कि चांसेस ऑफ वी कमिटिंग अ मिस्टेक इन दैट सिचुएशन बिकम्स वेरी हाई। मतलब जो हम चीज नहीं चाह रहे होते, वी डोंट वांट टू कमिट अ मिस्टेक, येट वी आर सेल्फ फोर्स अस टू मेक सम मिस्टेक, बिकॉज वो फेयर हमारे पे इतना ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, it's getting too much, that fear is overpowering us, right। और जब हम fearless होके without thinking about what will happen next, without thinking about the result, without having the greed of winning or getting that job, or any fear of losing it, जब वो greed और fear की cycle से हम बाहर होके when we do something इन द मोमेंट, तो हम उस समय क्या होते हैं, वी आर इन द मोमेंट। और हम बेस्ट एंजॉय पता है कब करते हैं, जब हम इन द मोमेंट होते हैं, राइट। जब हम रिजल्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, कल क्या होगा, इंटरव्यू पास होगा नहीं होगा, एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा, विल आई एवर बी सक्सेसफुल इन लाइफ, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो जाएगी, मतलब इस टाइप के जो थॉट्स है, वो हमें कहाँ ले जाते हैं, हमें फ्यूचर में ले जाते हैं, प्रेजेंट से दूर। और जब हम प्रेजेंट में होते हैं विदाउट having these thoughts about any greed or any fear or any future uncertainty, तो जब हम प्रेजेंट में होते हैं we are enjoying ourselves the most, and when we enjoy, मतलब इंटरव्यू भी अगर जब आप एंजॉय करके दे रहे होते हो ना, तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। दो क्वेश्चन अगर बीच में आपको नहीं भी आते, वो चलेगा, यू नो दैट,
मोस्ट पीपल डोंट नो दिस थिंग. उनको लगता है इंटरव्यू में गए हैं, 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 के 10 आंसर अपने को आने चाहिए. ऐसा जरूरी नहीं है. 10 चीजें आपसे पूछी गई है, आपने अगर 8 चीजों का भी सही जवाब दे दिया है, 7 का भी दे दिया है, बाकी जो आपने नहीं भी दिया, जैसे कि रमन ने भी अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया था, इट्स परफेक्टली फाइन. वी आर नॉट हियर claiming that we know everything in this world. We are just, sharing our knowledge, and we are open to learn more. वो चीज कन्वे होनी चाहिए to the other person, right? That you have that humbleness, that openness to explore and learn. वो कब कन्वे हो पाएगी? जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप नर्वस नहीं हो गए हो क्योंकि आपको 2 चीजें नहीं आती थी. आप नर्वस कब नहीं हो गए? when you are not thinking too much about anything, when you are in the moment, when you are calm, composed, not overthinking, that is the time when you are at your best. हम सब अपना बेस्ट देना चाहते हैं ना हर चीज में. इंटरव्यू भी दिया है तो हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना चाहते हैं, और बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने के लिए हम क्या करते हैं, अपने आप को ओवर स्ट्रेस, ओवर प्रेशराइज, ओवर थिंकिंग के लूप में फंसते हैं, जिससे कि हम अपना बेस्ट नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं. राइट? So it's very important to get out of that mental loop first. ठीक है? Get a solution to this thing rather than first talking about a list of the questions. First, we need to get to a solution, how to stay calm and composed during any interview or any important event of your life, for that matter. Where, Vidum, I want to share yeah, one more thing actually. yes, As yes. much as I have noticed, so हम Indians की सब main nervousness का interview में reason यही है that our communication. I mean, Hmm. अगर if you have good communication, आपका 90% confident level वैसे ही no it get built up. And I mean, जहाँ तक मेरा ख्याल तो communication is the main reason for nervousness in the Hmm. interview. राइट, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पुट अक्रॉस किया है. दैट इट्स नॉट जस्ट आर इमोशंस, जिससे अभी मैं बात कर रही थी, दैट द इमोशंस ऑफ ग्रीड एंड फेयर causing nervousness. It's not just about those emotions, but it's also about the communication. Sometimes the person is not confident about their communication skills, तो उनको उस वजह से नर्वसनेस हो रही है. मतलब उनको, दे मे नो द आंसर, उनको पता है कि उनको आंसर्स पता होंगे मोस्टली, लेकिन उनको साथ में ये भी पता है कि आई मे नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट इट वेल, मेरी इंग्लिश वीक है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, जिसकी वजह से मतलब एक एक अंडर कॉन्फिडेंट फीलिंग आती है. राइट? सो दोनों चीजों का सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, प्रॉब्लम्स हमें पता है, ये मेजर प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से. ठीक है, रादर देन जस्ट द क्वेश्चंस पार्ट, वो भी हम डिस्कस करेंगे फॉर श्योर. ठीक है, बट जो मेजर प्रॉब्लम है, दैट इज द इमोशनल साइकोलॉजी पार्ट, जो आपका साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है बिफोर एंड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू और एनी इम्पोर्टेंट इवेंट, और आपके कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव से जो अंडर कॉन्फिडेंस आपको फील होता है, इन दोनों चीजों का क्या सॉल्यूशन है? इफ बिफोर आई गिव एनी सॉल्यूशन, इफ आई आस्क यू गाइस, क्या इनसाइट्स या इनपुट्स आपके रह गए? इस प्रॉब्लम को हमें रूट से खत्म करना है. ठीक है, सुपरफिशियल लेवल पे सिर्फ अभी बात करने के लिए, सेशन के लिए नहीं, फॉर एवर इस प्रॉब्लम को हमने खत्म करना है, बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम
किसी ना किसी लेवल पे सबकी प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है ना। किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, बट having your hard skills, investing time, money into learning financial modeling, financial analysis, valuations, M&A, and stuff like that will give fruits when we overcome these problems also, right? So, आप क्या solution suggest करते हो which can help eradicate these two problems from the very roots? कैसे eliminate करें? सोचो. Ma'am, Yes. we can practice more about that and we can clarify our thoughts that Mm-hmm. practice and practice, that means perfect, perfect. Okay. What will you practice? This area where there are weaknesses, like we have weakness in the communication part, Hmm. that part. We How have will you practice communication? by self reading in the mirror and communicate with ourselves, Okay. practice the answers in the mirror. So that's how we overcome that. Okay. Fine enough. ठीक है. और बताइए, one solution Rizal gave was to practice communication, and for that he suggested using some mirror, talking to yourself, and practice it so that when you go and talk to somebody, you are better equipped to do that. Okay, Raman also suggests the same thing. Like results is like we need to give the interview for yourself. Like we need to prepare the questions and we need to answer so it will gain confidence on ourselves. Bilkul, right? Absolutely. I also agree with it that, you know, confidence comes with practice and experience. ये दो चीजें हैं जिसको हम बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकते. आप कुछ भी कर लो, चाहे हम इंटरव्यूज की बात करें या कोई भी और, इंटरव्यूज की बात हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो गई, या कोई भी स्किल की बात कर लो आप, कोई भी स्किल, बी इट financial modeling for that matter. फाइनेंशियल मॉडलिंग आपको समझ आ जाए, ठीक है, क्या है, कैसे करते हैं, सब समझ आ गया, उसके बाद comes the important point, that is practice and experience. What is the difference between a newly qualified doctor and a doctor with 10 years of experience or 20 years of experience? You know, आपने I'm sure you guys can also relate to it, that some doctors are like, मतलब सबके कुछ ना कुछ फैमिली डॉक्टर्स या कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास we like to go, ठीक है. तो वहां पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि those people can just listen to your symptoms, and they can just tell about the possible problems, the diseases or anything, and they will start your medication right away. टेस्ट भी लिख देंगे और मेडिकेशन भी दे देंगे, और टेस्ट के रिजल्ट्स आने से पहले वो बता चुके थे कि ये प्रॉब्लम है, एंड उसकी मेडिकेशन भी स्टार्ट कर चुके थे. whereas अ पर्सन जो न्यूली क्वालिफाइड होगा, उसके पास भी सेम नॉलेज है, नॉलेज सेम है दोनों के पास, ठीक है ना, दोनों ने सेम कॉलेज से सेम कोर्स किया है, दोनों की सेम अंडरस्टैंडिंग है, दोनों ही टॉपर्स क्यों नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो फॉर दैट मैटर, बट द पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस definitely, you know
practice that thing so much कि अब वो अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है. ठीक है, so some things can be learned only and only with experience and practice. No course, no qualification can do that. Only practice and experience. ठीक है, so definitely अगर आप एक मेन इंटरव्यू से पहले आप अगर एक प्रिपरेटरी इंटरव्यूज अपने देते हैं, चाहे आप खुद को देते हो या कोई आपके लेता है, जैसे कि वी आल्सो हैव मॉक इंटरव्यू aligned for you. Why is it so? Because of the same reason that आप जितना उस चीज को फेस करोगे, मतलब अगर कोई चीज आपका फियर है भी सही, तो द मोर you face it, the more you realize that it's not the end of the world, even if you fail. The only way to overcome any fear of yours is to face it eye to eye and again. ऐसा भी नहीं है कि एक बार फेस कर ले. If you're fearful of heights, you stand on the fifth floor, 10th floor, just stand up, just look at that height face to face again and again until that time comes where you don't feel the fear anymore. ठीक है ना? तो आप जितना उस चीज को प्रैक्टिस करोगे, उस चीज को फेस करोगे, उतना ही आप ऑटोमेटिकली आपकी जो साइकोलॉजी है वो बेटर इक्विप टू हैंडल इट होती रहेगी. ठीक है, किसी के लिए दो एक्सपीरियंसेस ही बहुत है, किसी को 20 एक्सपीरियंसेस लग जाएंगे. ठीक है, बट एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ एनीथिंग कैन बी डन, एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट. बट अब जब हम यहाँ पर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो we don't want to waste even two interviews on just uh, you know just on that fear, right? We don't want to waste the interview, even if it's our first interview or the second interview or 10th interview. We don't want to waste it on just our fear. So uske liye what we can do is we can practice interviews on our own also. ठीक है, बट उसमें भी मैं एक चीज कहूंगी कि बहुत लाइट हार्टेड तरीके से इस चीज को अप्रोच करना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. आई मीन that's what I can say from my experience, not specific to interviews or anything, but generic in itself that I think that's what I am realizing, that in order to pursue everything in a very perfect manner, I overstress myself a lot unnecessarily, and that is not required. A light-hearted attitude is what is required if you want to do something good. Everybody intends to do their best, right? Yes. When we go to the interview, we go with the fear of losing of failure. Hmm. We side on the fear of losing, so that should be better for us to do the better in life. Sorry, क्या लास्ट में क्या बोले आप? Fear, when we go to the interview, we go with the fear of losing the Right, interview. If we side on right. the fear of losing, it should be better for us to go with the better interview. If we do what? If we cut on the fear of losing or failure, How will we cut that fear off? How do you think we can cut it? more self-confidence in ourselves, to believe in our knowledge. आपको अपने पे बिलीफ है, तब भी तो आपके पास एक fear of losing that interview हो सकता है, losing that job हो सकता है. I think we practice more and more. इस चीज को कैसे प्रैक्टिस करोगे आप? अभी ये इमोशंस कम्युनिकेशन को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, नो डाउट इन दैट. आपको कम्युनिकेशन पे अपने डाउट है, आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट नहीं हो विद रिस्पेक्ट टू योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर इंग्लिश में भी, तो आप उस चीज पे वर्क कर सकते हो. यू कैन प्रैक्टिस इट,
with yourself, with somebody again and again until you get more and more confident about it. एंड 2-4 इंटरव्यूज वैसे ही दोगे तो वैसे ही वो कॉन्फिडेंस आपका और बिल्टअप हो जाएगा. तो कम्युनिकेशन वाली चीज के ऊपर हम काम कर सकते हैं थ्रू प्रैक्टिस. if we lack some English and something like that, we can maybe take up some course online. आजकल फ्री मटेरियल भी बहुत मिल जाता है. तो there are ways to improve our communication skills, no doubt in that. But what about this emotional factors? Ma'am, Yes. interview is taken our interview for not for rejection, for our interview. That we should cut off this rejection part. Okay, Rejection part, I didn't get your point exactly. लाइक जैसे जब इंटरव्यू देते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हुए तो Hmm. क्या होगा. Hmm. तो बड़ी बात ये है क्योंकि मेरा भी सेम वही हुआ, मैंने 2 बार दिया, वही चीज हुई है जिसके लिए Mhm. मैं सोच के गया ये वाली जॉब चाहिए, जैसा आप बता रहे थे कि वो Hmm. सोच बताने से वो नहीं होता. और Hmm. सेम जिसमें अब आप कैजुअल नहीं बोल सकते, मतलब आप फ्री होके इंटरव्यू दे दो कि जो होगा देखा जाएगा, Hmm. उसको आप क्रैक करके निकाल देते हो इंटरव्यू. जो कि आप बिल्कुल. गलत बोलो, चाहे गलत भी अगर आप बोल रहे हो तो उसमें भी आपको फील होता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, चलो कुछ भी है, वो Hmm. भी कॉन्फिडेंटली गलत निकलता है आपका. और जब जो सोच के हम इंटरव्यू देते हैं तो सही भी बोलते हैं तो वो भी हमें लगता है हम गलत जवाब दिया हमने. Hmm. ये चीज होती है. तो Right. ये होना चाहिए कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो रिक्रूटर है उससे भी हमें जरूरत है, इसलिए वो इंटरव्यू कर रहा है. हम Right. खाली यही सोचते हैं कि हमें जॉब की जरूरत है, सही बात है. उनका साइड नेगेटिव ले लेते हैं कि वो कहीं रिजेक्ट कर दे तो क्या होगा. सामने Hmm. वाला तो सबको हायर करने के लिए बैठा है, तो वो Hmm. चीज रहनी चाहिए, पॉजिटिविटी अपने अंदर. Right. Absolutely correct. Okay. Yes, Nazneen, absolutely. We should think positive. We should stay calm before the interview and take deep breath. Absolutely. I totally agree with it. Um, उस टाइम पे मतलब हम अपने आप को अननेसेसरीली स्ट्रेस्ड आउट. हाँ, ये आप इंटरव्यू से पहले कर सकते हैं, बट फिर इंटरव्यू बैठने के बाद वही हो जाता है, कामनेस चला जाता है, पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है और डीप ब्रेथ फिर लेना भूल जाता है इंसान. मैम ओके. इसका जैसे कि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी इंटरव्यू में आप जाओ तो सबसे पहले इंटरव्यू स्टार्ट जस्ट 10 मिनट पहले ये सोचना है कि सोचना ही नहीं है इसमें होगा या नहीं होगा. नहीं होगा तो फिर दूसरा देंगे. कोई कुंभ का मेला नहीं है जो 5 साल बाद आएगा. तो इसमें थोड़ा सही सा बात रिलैक्स है. फील होता है. हमने जितने भी इंटरव्यू दिए यही करा. शुरू में मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होता था ये सोच के कि नहीं होगा तो क्या होगा. ये पहले फिर सोचने लगा जब भी जैसे इंटरव्यू के अंदर घुसना है ठीक है, इंटरव्यू नहीं होगा तो क्या होगा, दूसरा कोई देंगे. बिल्कुल. तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजीव आप. Totally second to that. Totally second to that. Uh, Shivangi says that she's not getting interview opportunities. She wants to see if she has improved or not. Well, Shivangi, hopefully you should get more interview opportunities after this program. ठीक है. And we have some placement assistance and everything also. So I'm sure वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ help मिलेगी. And you'll hopefully get to see if you've improved or not. And I'm sure you have improved. Okay. And the point which Sanjeev was stating is very important. I think that is one thing we need to tell ourselves. Um, हमसे सबसे ज्यादा कौन बात करता है? आप खुद ही अपने आप से सबसे ज्यादा बातें करते हैं, पता है आपको? हमें पता भी नहीं है. We don't even have the realization. But आप खुद अपने आप से जितनी बातें कर देते हैं ना, अनसेड बातें आपके माइंड में, मतलब फ्रॉम द टाइम यू गॉट अप
in the morning till the time you go to sleep, हमारे दिमाग में कितना चल रहा होता है, मतलब इज इट जस्ट मी और इट्स यू ऑल्सो? सबके दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स आते रहते हैं from the moment we get up to the moment we go to sleep. It's like never ending voice inside which is talking ye wo. I mean, we are talking so much to ourselves every single day of our lives. So it's so much important and उसकी हमारे को कोई realization ही नहीं है। जो चीज मतलब उठने से लेकर सोने तक हो रही है, उस चीज की अपने को कोई कोई रियलाइजेशन, उसकी इम्पोर्टेंस की, उसकी कोई सिग्निफिकेंस के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। इट्स सो वेरी इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर टेलिंग आवरसेल्व्स। मतलब कोई हमारे को कुछ बोल देता है आकर के, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि भाई हमारे आसपास ये एटमॉस्फेयर था तो हमारी ये कंडीशनिंग हो गई, ठीक है, वी बिकेम दिस वे, राइट, बिकॉज हमारे आसपास ये हो रहा था। तो मतलब just imagine the amount of influence we are making on ourselves when we are talking to ourselves. Yes, Raman, absolutely होता है। तो अब अगर आप इतनी बातें अपने आप से कर रहे हैं तो आपको थोड़ी अवेयरनेस तो होनी चाहिए, हमें रादर आई शुड से, हमें थोड़ी अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं। एंड अगर हम उस अवेयरनेस लेवल पे आते हैं तो आप रियलाइज करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व करके देखना, जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग, डोंट ट्राई टू स्टॉप इट, जस्ट ट्राई एंड बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर टेलिंग योरसेल्फ। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब आपको पता ही नहीं है, ठीक है। आउट ऑफ कंट्रोल चीज कब होती है? जब आपको आइडिया ही नहीं है कि आप अपने आप से कितनी बातें कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आपको आइडिया लगना शुरू हो जाता है, यू गेट अवेयर ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, क्या बात चल रही है आपके माइंड में। तो अपने आप धीरे धीरे जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करते हो, मतलब कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस करना है आपने, तो वो बेटर हो जाएगी। इमोशंस को प्रैक्टिस करना है आपने, कैसे प्रैक्टिस करना है? जस्ट बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट यू आर टेलिंग योरसेल्फ। एंड 99% ऑफ द सिचुएशन, मतलब आज से प्रैक्टिस करनी शुरू करना, ठीक है। ट्राई ऑब्जर्विंग योर योर थॉट्स, वट एवर यू आर सेइंग टू योर सेल्फ फॉर 1 वीक, ठीक है। इस चीज को, इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना। मैं भी करूंगी, ठीक है, मैं भी करूंगी, आप भी करना। एंड लेट अस शेयर आवर एक्सपीरियंसेस नेक्स्ट वीकेंड कि क्या हमने ऑब्जर्व किया, किस डायरेक्शन के थॉट्स हमारे माइंड में मोस्टली चल रहे थे, ठीक है। ये चीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीकेंड। जनरली क्या होता है, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है अभी तक, अभी नेक्स्ट वीक का ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट वीकेंड शेयर करूंगी आपके साथ। बट अभी तक जो अवेयरनेस रही है जितनी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, तो मतलब मोस्टली अपने आप को it's more about overthinking. Thinking is important, but overthinking paralyzes you. So it's more about overthinking, overstressing yourself on something or the other, and you know, and अगर आप किसी चीज के बारे में ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस हो रहे हो, तो डेफिनेटली फिर वो नेगेटिव थॉट्स ही इनकलकेट होने वाली है वहां से, पॉजिटिव थॉट्स नहीं इनकलकेट होगी। पॉजिटिव थॉट्स कहाँ से आते हैं? जब हम सिर्फ एक सही चीज सोच के फुल स्टॉप लगा देते हैं वहां पे। हम बस, प्रॉब्लम क्या है, सही चीज सोच भी लेते हैं, वहां पर फुल स्टॉप नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से वो थिंकिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू ओवर थिंकिंग। When it comes to overthinking, it becomes stressful, and when it comes to stressful, it leads to negative thoughts. Yeah. तो
फोबियाज फेयर सब होता है। और जो संजीव ने बात बोली कि ऐसे कुंभ का मेला तो है नहीं कि 5 साल में एक बार ही आएगा। नो event, we must remember one thing, no event in our life is defining our life, has the power to define our life. It's the combination of so many things that happen in life that creates a life. No single event can define your life ever. So no single interview can define your life ever. अगर होता है वो, उसमें कुछ अच्छा है, नहीं होता वो तो उसमें भी कुछ अच्छा है, कोई और आ जाएगा यार। It's not the end of the world. No event can define your life. No event is the end of the world for you. These are all part and parcel of life, and we should take them lightly. कोई भी एक चीज हमारी लाइफ को डिटर्मिन करने की पावर नहीं रखती है, चाहे वो 12th के बोर्ड थे, चाहे वो कोई ग्रेजुएशन थी, चाहे वो कोई जॉब थी, चाहे वो कोई जॉब इंटरव्यू था। कोई एक चीज हमारी लाइफ नहीं डिफाइन कर रही। अगर हमारी लाइफ कुछ डिफाइन कर रहा है ना, तो हमारा एटीट्यूड है, और कुछ नहीं है। इफ वी हैव दैट strong attitude to do the best no matter what the situation is. So if we just focus upon giving our best to every situation that we face in life, then sooner or later the situation also starts giving favorable results, even if the situation wasn't planned. 99% of the situations are such which are unplanned, which we did not plan for and happened. But if we have that attitude to give the best to every situation, planned or unplanned, then things, the final result is always in your favor, because आपने अपना बेस्ट दिया, और जब हम अपना बेस्ट देते हैं तो eventually we actually get the results out of it. That's what I can again say from my experience, not a bookish thing. With my experience, I can say that if we start giving best to the situation no matter what, sooner or later, I mean, the struggle can be hard, but sooner or later, you can see the results. हाँ, फैमिली प्रेशर हो सकते हैं, डेफिनेटली रिजॉल्व प्रेशर्स, फैमिली प्रेशर्स कैन बी देयर। देखो प्रेशर हर जगह है, सेल्फ इंड्यूस्ड प्रेशर हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, ठीक है, पेयर प्रेशर हो सकता है, आपके फ्रेंड्स ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, यू हैव, या बेटर जॉब कर रहे हैं, यू आल्सो वांट अ बेटर जॉब, यू गेट प्रेशराइज, फैमिली ने प्रेशर दे दिया, या किसी ने एक्सटर्नल पार्टी ने प्रेशर दिया, आपने खुद को ही प्रेशराइज कर रखा है बहुत ज्यादा, ठीक है, सोसाइटी क्या बोलेगी, पता नहीं क्या बोलेगी। अगर मतलब इफ यू कीप थिंकिंग अबाउट व्हाट द अदर पर्सन थिंक्स, I just feel like when will we have the time to think what we actually want to think? अगर हम ये सोचते रहे कि फलाना बंदा क्या बोलेगा, फलाना बंदे के हिसाब से क्या होना चाहिए, तो फिर हम अपनी लाइफ कभी भी नहीं जी रहे। वी आर लिविंग देयर लाइफ, देयर थॉट्स, वी आर नॉट लिविंग आवर लाइफ। सबसे हमें ये सब बेसिक्स अपने करेक्ट करने होंगे, ठीक है। इंटरव्यू का फेयर वही निकल जाता है जब एक चीज आप अपने आप को बोल दो, दैट दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ फॉर मी, एंड इट्स नॉट कुंभ का मेला जो 5 साल में एक बार आएगा, ठीक है। जस्ट चिल, सोसाइटी क्या बोलेगी, दैट सोसाइटी इज कंसर्न। आई हैव टू थिंक व्हाट आई हैव टू थिंक, बिकॉज वी गेट ओनली वन लाइफ टू थिंक एंड डू व्हाट वी वांट टू डू, राइट। तो अगर ये बेसिक्स, अब देखो बेसिक्स अपने को अभी हमने बात करी है, सब समझ भी आ गया, एंड वी कैन रिलेट विद इट, वी फील काम एंड कंपोज्ड अराउंड इट, ठीक है, सब कुछ आ गया है। बट होता क्या है कि अभी के लिए ये सारी बातें आपको याद भी हो गई है, एंड यू आर रिलेटिंग विद इट, यू आर विद इट फॉर नाउ। बट फिर क्या होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन आई, कुछ अनप्लान्ड सिचुएशन आई, हाथ पैर फूल गए,
इंटरव्यू आया, नर्वसनेस आ गई, तो मतलब वो चीज परमानेंटली सॉल्व नहीं हुई। हमने बात करी, उसका सॉल्यूशन निकाला कि भाई अपने ये सब चीजें अपने आप को बोलनी पड़ेगी, तब वी फील बेटर अबाउट इट। बट अगेन इट वाज इन द मोमेंट। नाउ हाउ टू मेक इट परमानेंट? आप इस चीज को परमानेंट कैसे बना सकते हो कि कोई अनप्लान्ड सिचुएशन आई, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आई, इंटरव्यू आया या कुछ भी आया, अभी जितना काम आप फील कर रहे हो तब भी आप उतना ही काम फील करो। ऐसा कुछ हो सकता है? इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल संजीव। देन यू कांट डू एनीथिंग। Absolutely. If we keep thinking what the society will think, क्योंकि सोसाइटी में तो कोई ना कुछ उल्टा ही सोच रहा होगा, हम कुछ नहीं कर सकते अगर हम ये सोचते रहेंगे कि सोसाइटी क्या सोचेगी। हाँ जी, तो कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, no event is end of life for us. No one interview is defining our life, and we will get another interview. So just chill. ये सब बातें आपने आपको बोली, लेकिन फिर भी 4 दिन बाद या 2 महीने बाद अगर एक इंटरव्यू आएगा तो नर्वसनेस आएगी कि नहीं आएगी? ये बताओ, आएगी कि नहीं आएगी? Ma'am, यस। when the interviews, our interviews tomorrow or day before the next day, our whole body gets shivered. Like, सॉरी, कैन यू रिपीट? योर वॉइस वाज अ लिटिल लो। is I am audible? यस। And when our interview comes very near, no? When we feel that our whole body like shivering very fast and shivering part like that. अच्छा, ओके। सो मतलब ये सारी बातें करने का भी कुछ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आ पाया, ठीक है? इफ मतलब इस चीज को फिर परमानेंटली रेक्टिफाई कैसे करें कि ये प्रॉब्लम ही ना रहे? प्रॉब्लम खत्म कब होती है? जब उसके इफेक्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ऐसे नहीं कि फॉर द मोमेंट खत्म हो। तो इस चीज को कैसे हम परमानेंट कर सकते हैं? मैम जैसा कि मैंने कहा कि इतना सोचना है हमें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, फिर से इंटरव्यू आएगा, तो जैसे ही आप पहला इंटरव्यू में ये चीज सोचोगे, एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है उसी टाइम, और वो इंटरव्यू के बाद आपको ये फील हो जाएगा कि ये मेरा सही था, उसके बाद ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा मैम। अगले इंटरव्यू के लिए फिर आप वही करोगे कि जो मैंने पिछली बार तो किया था, अच्छा रिस्पॉन्स, तो डे बाई डे वो इम्प्रूव होते जाएगी और अल्टीमेटली वो एक दिन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बोला आपने, दैट वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्फ of these thoughts again and again during these situations, and ultimately एक्सपीरियंस के साथ आप उस चीज को, इस एक्ट को भी प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज सेइंग द राइट थिंग्स टू योरसेल्फ एट द राइट टाइम। जनरली वी आर ourselves not saying right things to ourselves, मतलब we are saying demotivating things to ourselves in our mind, ठीक है? नेगेटिव और डिमोटिवेटिंग थिंग्स हम ही अपने आप को बार बार बोल रहे थे। ऐसे ही थोड़ी ना हम, हमारे अंदर वो फेयर्स आ गए, ऐसे ही थोड़ी ना वो नेगेटिव इमोशंस आ गई हमारे अंदर, हमने उसको प्रैक्टिस किया है भाई। नेचुरल टेंडेंसी होती है एक ह्यूमन माइंड की कि नेगेटिव चीजों को, उसको प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। तो हमारे अंदर अगर कोई भी फियर भी अगर आपके अंदर आया है ना, तो आपने नॉट नोइंगली उसको प्रैक्टिस किया है बार बार अपने सिस्टम में, अपने माइंड में, तब जाके वो इतना स्ट्रांग बन पाया। तो अगर आपको एक पॉजिटिव थॉट को अपने माइंड में, पॉजिटिव एटीट्यूड को इनकलकेट करना होगा अपने माइंड में, तो आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कि आपने अपने आप को एक बारी को तो ये चीज बोल दी, ठीक है, आपने एक अच्छी बात समझ ली, अपने आप को एक बारी को बोल दी, ठीक है, उस मोमेंट के लिए आपके सिस्टम में वो बात चली गई, बट आपके सिस्टम में
पुराने जो गार्बेज है वो भी तो वहीं पे है ना, निकल तो नहीं गया ना, वो फेयर, वो एंजाइटी, वो जो भी नेगेटिव थॉट्स या फियर ऑफ फेलियर और एनीथिंग, वो सब अभी भी आपके सिस्टम में है। तो एक तरफ से एक पॉजिटिव थॉट आया है जो कि 1 मिनट हुआ है आपकी लाइफ में आए हुए, आपके माइंड में आए हुए, और दूसरी तरफ वो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस जिसको आपने इयर्स ऑफ प्रैक्टिस उसमें इंड्यूस करी है, राइट? तो अब क्या होगा, गिवन सम टाइम, वो जो इयर्स ऑफ प्रैक्टिस थी ऑफ दैट फेयर, दैट विल स्टार्ट ओवरपावरिंग योर पॉजिटिव थॉट। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको अगेन अपने आप को, यू डोंट हैव टू फाइट विद दैट फेयर, यू डोंट हैव टू ट्राई टू सप्रेस इट, आपको उसको सप्रेस करने की कोशिश नहीं करनी होगी, आपको बस इस पॉजिटिव थॉट को बार बार इंकलकेट करना हो, यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ अगेन एंड अगेन। और जैसे जैसे आप इसको अपने आप को इन पॉजिटिव थॉट्स को बार बार, यू स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव स्टफ टू योरसेल्फ। अभी तक आप क्या कर रहे थे, अपने माइंड में जो आप सुबह से लेकर के रात तक जो बातें कर रहे थे वो सब क्या थी, अपने आप को स्ट्रेस करने वाली बातें, अपने ओवर थिंक करने वाली बातें, नेगेटिव वाली बातें, ये हो गया तो वो हो गया तो, फालतू की इनसिक्योरिटीज या फेयर्स या ये सब चीजें। तो आपका माइंड किसी और चीज को प्रैक्टिस कर चुका है इतने सालों में जिसकी आपको रियलाइजेशन भी नहीं थी। अब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को अच्छी बातें बोलने की कोशिश करो। तो डेफिनेटली आप थोड़ी सी अच्छी बातें अपने आप को बोलोगे, लेकिन आपका माइंड जो अपनी एक हैबिट लेके बैठा है, हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को, हर चीज को हैबिट्स हो जाती है, ठीक है? तो हमारे माइंड को हमने हैबिट डाल रखी है उल्टा सीधा सोचने की, और जैसे ही हम कुछ सीधा सिर्फ सोचने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर के लिए सोच पाते हैं, बट फिर से जैसे ही हम, मतलब हमें सीधा सोचने के लिए, पॉजिटिव सोचने के लिए एफर्ट लगता है, बट उल्टा सोचने के लिए एफर्ट नहीं लगता, क्योंकि हमने उसको इतना प्रैक्टिस कर लिया, इतना वो हमारी हैबिट बन चुकी है कि अब वो एफर्टलेसली हमारे अंदर से निकलता है। तो पॉजिटिव और अच्छा सोचने के लिए एफर्ट लगा, नेगेटिव सोचने के लिए एफर्ट नहीं लगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करोगे, नेगेटिव थॉट्स एफर्टलेसली आने शुरू हो जाए, मतलब थोड़ी देर के लिए आप पॉजिटिव हुए भी, स्ट्रेस फ्री हुए भी, लेकिन फिर से जो आपकी नेचुरल टेंडेंसी है माइंड की नेगेटिव सोचने की, वो वापस आनी शुरू हो गई, आपने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया फिर से। अब आपने बार बार, जब आप एफर्ट लगेगा, मतलब आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि सब कॉन्शियसली तो आप नेगेटिव सोचने की हैबिट प्रैक्टिस कर ही चुके हो। तो कॉन्शियसली जब आप पॉजिटिव सोचने की प्रैक्टिस करोगे करोगे बार बार करोगे, एफर्ट डालोगे, अवेयरनेस रखोगे अपनी थॉट्स को लेकर के कि किस टाइप की थॉट्स आ रही है, फिर उनको उनको कैसे करेक्ट करना है, या उनसे काउंटर पॉजिटिव थॉट्स कैसे इंड्यूस करनी है माइंड में। जब आप बार बार इस चीज को प्रैक्टिस करोगे फॉर सफिशिएंट टाइम, मतलब आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्स टू चेंज अ हैबिट, बट कई जगहों पर 21 डेज, आई डोंट नो 21 डेज का क्या लॉजिक है, बट कई जगह पर 21 डेज की बात की जाती है कि अगर आप किसी भी हैबिट को अपने सिस्टम में इनकलकेट करना चाहते हो तो यू नीड 21 डेज फॉर दैट। तो अगर 21 डेज तक इफ वी कैन डू दिस थिंग, दैट वी कैन बी अवेयर ऑफ आवर थॉट्स, एंड अगर वहां पर स्ट्रेसफुल नेगेटिव थॉट्स है, वी ट्राई टू थिंक पॉजिटिव, एफर्ट डालते हुए, तो 3 वीक्स बाद या मे बी 1 मंथ बाद, ठीक है, धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे जैसे हम पॉजिटिव थॉट्स को प्रैक्टिस करेंगे, इवेंचुअली हमारी जो नेचुरल टेंडेंसी होगी, जो पहले नेगेटिव थॉट्स सोचने की थी, अब हमारी नेचुरल टेंडेंसी
पॉजिटिव थॉट सोचने को बनती जाएगी एंड धीरे धीरे फिर हमारा पूरा सिस्टम ही चेंज कर जाएगा। समझ रहे हो? तो इस चीज की भी प्रैक्टिस करी जा सकती है। जो ये इमोशंस वाला फैक्टर है, दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू व्हाट वी आर टेलिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मॉर्निंग टिल द नाइट। So being aware of what we are telling ourselves and inducing some positive and sometimes पता पॉजिटिव की जगह पर सिर्फ न्यूट्रल थॉट्स पुट इन करना भी जरूरी होता है। न्यूट्रल एज इन मतलब पॉजिटिव क्या होगा, लेट्स से आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो नेगेटिव थॉट क्या हो सकता है उससे रिलेटेड? नेगेटिव हो सकता है कि कहीं ये इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ तो मुझे तो ये जॉब चाहिए, तो कहीं ये क्रैक नहीं हुआ तो, ठीक है, दैट इज द नेगेटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट क्या हो सकती है? ये इंटरव्यू तो मेरे को ही मिलेगा, ठीक है, बिकॉज मैं डिजर्विंग हूँ, मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन है, इतना एक्सपीरियंस है, इतने स्किल्स है, मेरे पास सॉफ्ट स्किल्स भी है, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मेरे से बेटर कैंडिडेट कहाँ मिलेगा, ठीक है, दैट इज बीइंग वेरी पॉजिटिव। मेरे से बेटर कैंडिडेट इनको कहाँ मिलेगा, इनको भी तो जॉब की जरूरत है, इनको भी तो किसी पर्सन की जरूरत है एंड आई एम द बेस्ट सूटेड पर्सन फॉर इट, सो आई एम बीइंग वेरी पॉजिटिव हियर, ठीक है। न्यूट्रल थॉट क्या होगा? न्यूट्रल थॉट वुड बी द वन, समथिंग लाइक संजीव said, that is no job interview is the end of the world। हो गया, बढ़िया बात है, नहीं भी हुआ और कोई दे लेगा यार, इतना टेंशन किस बात का लेना। कोई एक जॉब तो मेरी लाइफ डिफाइन नहीं कर रही, कोई एक जॉब तो मेरा करियर डिफाइन नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो क्या है, वहां पर आप अपने आप को फैक्ट बोल रहे हो, दिस इज अ फैक्ट दैट एक सिंगल जॉब आपकी लाइफ नहीं डिफाइन कर रही है, ठीक है। एंड जो आप, यू आर जस्ट ट्राइंग टू डू द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू गेट, ठीक है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आप बहुत अच्छे हो सकते हो, वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस, सारे स्किल्स आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट somebody is better than you। There is a possibility that कोई रेफरेंस के थ्रू आया हुआ है, उसका ऑलरेडी जॉब फिक्स है एंड दिस इज जस्ट सम formality which is going around here। There is a possibility that कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए, आ गई, एंड बिकॉज ऑफ विच एक आपके हाथ में आया हुआ जॉब चला जाता है। There's a, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, लाइफ इज अनसर्टेन, वी डोंट नो, ठीक है। हम सिर्फ अपना बेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे एफर्ट्स, हमारी क्वालिफिकेशंस या हमारा कम्युनिकेशन या ये सब चीजें हमारे हाथ में है। बट एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो कंपनी में क्या चल रहा है, उस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, सिचुएशन कैसे टर्न अराउंड कर जाती है, इतने सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो accepting the fact that we cannot control everything and accepting the fact that no one event is enough to define our life, we are defining our life, not just one particular interview that we are about to give। so ये सब क्या है, facts है, ये न्यूट्रल थिंकिंग है। आप अपने आप को ओवर पंप नहीं कर रहे कि भाई ये जॉब तो मेरा ही है, आप अपने आप को अंडर पंप भी नहीं कर रहे कि भाई ये जॉब मैं तो, मेरे को क्यों मिलेगा ये जॉब, या मेरे को नहीं मिल पाएगा, मेरे को चाहिए था जो, तब आप अपने आप को ना पॉजिटिवली पंप कर रहे हो ना नेगेटिवली पंप कर रहे हो, आप अपने आप को बस न्यूट्रल फैक्ट्स बोल रहे हो, जो कि वही बोल सकता है जो कि एकदम डिटैच्ड होकर सिचुएशन को देख रहा है। मतलब अगर आपके इंटरव्यू की बात है, आपका फ्रेंड आपको अगर एडवाइस देगा जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको जॉब मिले या नहीं मिले, मतलब एज इन विल बी हैप्पी कि आपको जॉब मिला, लेकिन उसका जॉब नहीं है ना, तो वो थोड़ा डिटैच्ड होकर के सोच सकता है। तो एक पर्सन जो डिटैच्ड होकर के सोच सकता है उस सिचुएशन के बारे में, वो सिचुएशन को लेकर के
फैक्ट्स एंड फिगर्स बोलता है। तो अगर आप अपने माइंड में फैक्ट्स एंड फिगर्स बोलने की आदत लगा देते हो तो आप सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे ही बात करोगे, ठीक है, रादर देन इमोशंस, फैक्ट्स के बेसिस पे बात करोगे। तो अब ये हम पे है, हम किस टाइप की हैबिट अपने माइंड को लगा रहे हैं। जनरली जो हैबिट होती है वो नेगेटिव सोचने की होती है। पॉजिटिव एंड फैक्चुअल सोचने की हैबिट हमें डेलिबरेटली थोड़ा एफर्ट लेके लगानी पड़ेगी, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस, गेस यू कैन ट्राई इट। मैंने कभी इतना कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस ट्राई नहीं किए, ठीक है। What I have tried is this facts one, trying to think in a neutral sense, uh, trying to think from a detached angle, trying to just look at the facts rather than emotions. मतलब ट्राई है, कोई सक्सीड नहीं हुई हूँ मैं। इट्स नॉट अ वन डे टास्क, इट कम्स बैक टू the usual habits which the mind has, बट ट्राई वो है कि अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली पंप करने से बेटर है try to get neutral about the situation, not emotional about the situation, ठीक है। So we can practice and do something about these emotional angle as well, and we can practice and overcome this communication problem as well। and ये दोनों चीजें अगर आपकी करेक्ट हो गई है ना, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ करेक्ट भी छोड़ो, इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, तो भी एक राइट ट्रैक पे अगर आप चल रहे हो तो भी आप कोई भी टाइप का इंटरव्यू देने के लिए जाओ, बी इट टेक्निकल राउंड और जीडी और मे बी सम रिटन स्टफ और यू नो सम पर्सनल क्वेश्चन स्टफ, कुछ भी हो, आई थिंक यू कैन हैंडल देम वेल। पहले ये सारी चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए, तब जाके क्वेश्चंस की बात आती है, ठीक है। So, with respect to these things, if I've missed anything, कोई क्वेश्चन है आपका या कुछ शेयर करना चाहते हैं आप, तो प्लीज डू दैट, मोस्ट वेलकम टू डू दैट राइट नाउ, ठीक है। क्योंकि इसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन स्टफ, ठीक है। क्वेश्चंस एंड ऑल इस डोमेन से रिलेटेड पर्सनल एंड टेक्निकल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, वो सब चीजों के ऊपर हमने बात करनी है। ये जो कम्युनिकेशन एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ इंटरव्यूज रहता है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी कुछ डिस्कस करना चाहता है अभी, एनीथिंग, एनीबॉडी? नथिंग? ओके, मैम, यस। हमारी कंटेंट क्लैरिटी कितनी होनी चाहिए मैम एज पर टू सब्जेक्ट मैटर क्लैरिटी कितनी होनी चाहिए? टू देखो, टू रिमूव द नर्वसनेस, हमारी कंटेंट क्लैरिटी है। हाँ, आपका कॉन्फिडेंस वहां से भी आता है। आप एक तो अगर न्यूट्रल सोच के चल रहे हो, देखो कुछ भी हो सकता है, आई कैन बी द बेस्ट बट समबडी कैन स्टिल बी बेटर देन मी। तो कुछ भी चीज फॉर ग्रांटेड तो होती नहीं, लाइफ इज अनसर्टेन, जॉब हो सकता है आपको मिले, हो सकता है आपको ना मिले, 50-50 प्रोबेबिलिटी है, देखी जाएगी जो होगा। एक कोई एक इंटरव्यू तो है नहीं जिससे लाइफ डिफाइन हो रही है, ये नहीं हुआ तो अगला दे देंगे। अगर आप ये सारे फैक्चुअल थिंग्स अपने आप को बार बार बोलते हो तो कहीं ना कहीं आपकी नर्वसनेस में हेल्प होती है। फिर आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया, यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेल, तो वहां से आप कॉन्फिडेंट हो गए। और थर्ड कॉन्फिडेंस आपको आ सकता है व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, योर नॉलेज, योर स्किल्स, योर क्वालिफिकेशन। मतलब आपको पता है जो आपने किया है उससे रिलेटेड, जो आपका मतलब एरिया है उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा तो यू कैन हैंडल इट। वो एक कॉन्फिडेंस है। अब आप मेरे से पूछोगे कितना डिग्री का आपको नॉलेज होना चाहिए, तो ऐसे डिग्री स्पेसिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि कितना डिग्री का आपको नॉलेज होना चाहिए। हाँ, मतलब आपने अगर एक प्रोग्राम किया है, जैसे लेट्स से अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेना है,
तो अगर आपने ये फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोग्राम जो किया है, अब इसमें आपने फ्रॉम बेसिक एक्सेल टू M&A एंड वैल्यूएशंस तक आप गए हो, तो ये सब एरिया से रिलेटेड जो आपके एरियाज यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिए, उन एरिया से रिलेटेड आप कैसे डिफाइन करोगे कितनी नॉलेज होनी चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं, हाउ हाउ कैन यू डिफाइन द डिग्री ऑफ नॉलेज दैट यू शुड हैव फॉर दिस? गाइस जस्ट 1 मिनट के लिए होल्ड करना प्लीज. ओके, सो डिग्री ऑफ नॉलेज की बात की जाए तो देखो, ऐसा कोई वेल डिफाइंड कोई रूल बुक नहीं है. ठीक है, जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया है दैट नोबडी इज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ कोर नॉलेज, बट some knowledge with respect to whatever you have claimed on your resume. आपके रेज्यूमे में जो भी आप क्लेम कर रहे हो कि आपने एक एक्स क्वालिफिकेशन ली है, एक्स कोर्स किया है, आपके पास एक्स स्किल है, तो उससे रिलेटेड यू शुड हैव सम नॉलेज. तो वो मतलब मेरे को बड़ा वो लगता है कि इफ आई हैव टू प्रिपेयर स्पेसिफिकली फॉर the technical round of some interview, तो उसमें मेरे को बड़ा वेग लगता है, because I think that is correlated to my general understanding of my subject, uh, which cannot be defined with a certain specific set of questions.
Of course, if I have to define it with respect to just this program, then I can still have some specific things in mind, that these are the main points of this program, and this is what I should focus upon, and these are the possible questions that can come. If it has to be specific to one program for that matter, then some enclosed list, some exhaustive list of things can be prepared. But when it comes to your general knowledge of your domain, uh, you know, comprising of so many qualifications that you have done, so many skills you have acquired, so much of experience that you have acquired, वो जो जेनरिक फिर क्वेश्चंस हो जाते हैं, फिर वहां पर वो एरिया इतना ब्रॉड हो जाता है, ठीक है, कि थोड़ा सा गेस करना मुश्किल हो जाता है. हाँ, वहां पर यू कैन look for some things on the profile that you're targeting. तो मतलब आपने बहुत कुछ किया हो सकता है, बट आप एक स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, तो उस प्रोफाइल से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं. ज्यादा जेनरिक एज इन ब्रॉड एंडेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. They will be more related to the profile and your related knowledge and skills which are related to the profile. वहां पर आप कुछ अपना पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हो उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली. आपके जो भी क्वालिफिकेशन, नॉलेज एंड स्किल्स है, उनको कंबाइन करते हुए फिर एक एक डिग्री या एक बाउंड्री ऑफ कंटेंट आप डिफाइन कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गेट प्रिपेयर्ड. एंड ऑफ कोर्स जितना आप जेनरिक में अपने डोमेन को लेकर के पैशनेट और यू नो एक पैशनेट बोलो, या आपका जनरल इंटरेस्ट एंड जितना जनरल आपकी नॉलेज होगी विद रिस्पेक्ट टू योर डोमेन, उतना ही ज्यादा आप बेटर इक्विप्ड होगे, आप कॉन्फिडेंट हो गए अपने कंटेंट को लेकर के, जितना आप जनरली अपने डोमेन को लेकर के कॉन्फिडेंट हो. तो दैट इज कोरिलेटेड टू योर कॉन्फिडेंस ओवर योर डोमेन. तो डोमेन को लेकर के अगर आप कॉन्फिडेंट हो, प्रोफाइल से स्पेसिफिक आपने एरियाज को प्रिपेयर किया है, तो आई थिंक यू आर वेल इक्विप्ड विद the content part as well, right? So that is one thing. And अभी हम क्या करते हैं, let's discuss a few questions. Content part को ही आगे continue करते हुए let's discuss a few questions जो कि आपके जेनरिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस है, उनके क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, वो डिस्कशन अभी हम होल्ड करने वाले. ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉपर इंटरव्यू काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज उसके लिए हमारे पास मॉक इंटरव्यूज का एक सेपरेट सेशन है. ठीक है, ये वाला जो आज का सेशन है दैट वुड बी मोर रिलेटेड टू कि हम बेसिकली जो भी पॉसिबल, मतलब मेरे माइंड में जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस आएंगे, बी इट विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल क्वेश्चंस और टेक्निकल क्वेश्चंस, मेरे दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आई विल पुट अक्रॉस देम, एंड आपके भी दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, you guys put across all those questions, and we have a fair discussion over those questions and what can be the possible best answers for those questions. ठीक है, and you may jot down all the possible questions that are coming up during these discussions. मैं कुछ क्वेश्चंस बोलूंगी, कोई और कुछ क्वेश्चंस बोलेगा, तो एक बहुत अच्छी आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आ जाएगी फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस. पर्सनल अलग एंड टेक्निकल अलग, आप एक लिस्ट प्रिपेयर करके रख सकते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती है इन फ्यूचर की क्या आपका एक कंटेंट एरिया हो सकता है. ठीक है, टू वर्क अपॉन, एंड देन उनके पॉसिबल आंसर्स जो हम डिस्कस करेंगे उसमें से भी अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग. पहले पर्सनल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि
मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ पर्सनल क्वेश्चंस जो आपसे हर इंटरव्यू में पूछा गया है, कोई क्वेश्चन है ऐसा जो बहुत ही कॉमनली आपने सुना है विद योर एक्सपीरियंस? Define yourself. डिफाइन योरसेल्फ, ये क्वेश्चन आया आपको, डिफाइन योरसेल्फ, क्या आंसर दिया आपने इसका? मैम ये मुझे सुनने को मिलता है इंटरव्यू में, आई एम अ फ्रेशर बट नॉट गिविंग एनी इंटरव्यू, बट अच्छा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज द कॉमन हाँ, क्वेश्चन। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आया है या आए, आपका क्या आंसर होगा? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। We have to specify our backgrounds and how to add आप the value करो, to. आप करो ना, इसको आंसर करो आप। कैसे करोगे? कौन करेगा इस क्वेश्चन को आंसर? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बताओ बताओ, व्हाट हैपेंड? बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो गया ये। इज इट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ? व्हाट हैपेंड गाइस? क्या हुआ? क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं हम? क्वेश्चन पसंद नहीं आया, या उसका आंसर समझ नहीं आ रहा, या मैम क्या? आंसर समझ नहीं आ रहा, मैं बोले क्या, टेल मी व्हाट योरसेल्फ, अच्छा, और मतलब क्वेश्चन बैकग्राउंड में क्या डिफिकल्ट बोलना हो है। गया, क्वेश्चन क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। क्वेश्चन तो डिफिकल्ट नहीं है मैम, आंसर क्या बोलना है मैम, हाउ टू डिफाइन अब आवर बैकग्राउंड। वही डिफिकल्टी हो जाते हैं ना, व्हेन यू आर नॉट एबल टू डिफाइन इट, गिव द आंसर। जो आपको समझ में आ रहा है बताओ, क्या बोलोगे आप? इफ somebody else wants to pitch in, please go ahead, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस है हमारे पास, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है। वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग ऑल द पॉसिबल लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो पर्सनल टेक्निकल लेवल पे आपसे पूछे जा सकते हैं और जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हो। दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज जस्ट वन क्वेश्चन दैट हैज कम अप, उस पे हम इतना टाइम लगा रहे हैं। डू यू गाइस नीड अ ब्रेक और समथिंग? ओके, ठीक है, टेक अ ब्रेक, ठीक है, एंड थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एज वेल। एंड बाकी फिर ब्रेक के बाद we'll discuss a lot of questions are there in mind itself, ठीक है। बाकी जो भी आपके दिमाग में भी है वो क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, ब्रेक लेनी है, ब्रेक ले लेते हैं पहले, एंड देन we'll come back and we'll continue with this discussion, okay? So see you after the break.
Okay, so I hope everyone is back now. Let's resume. Before I forget, एक बार आपकी attendance भी लेनी है. Am I audible, guys? Can you guys hear me? Yes, you are audible. Okay. Okay, so एक बार आपकी फटाफट से let me take the attendance as well and then we'll discuss these questions and your resumes. ठीक है? So आज क्या date है? Today is 11th of September. So firstly, Aman. Aman is there in today's Yes, class. yes, ma'am. Okay. Bino, are you there, Bino? Dipanshu. Yes, I am here. Okay. Gitanjali. Lakshmi. Okay. Nazneen. Nazneen was there in the first half at least. Priyatosh. Yes. Okay. Raman. You're present. Okay. Razaul. Okay. Sanjeev. Okay. Shivangi. Actually, Nazni is facing some connectivity issues. She just pinged me. Acha. Okay. Subhash. Okay. Thanks, guys.
So now let's discuss a few questions. First, let's discuss the personal questions. ठीक है, तो उसमें आपसे एक क्वेश्चन put across हुआ था before the break, and that was, tell me something about yourself. ठीक है, तो कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? Who would like to answer this one? ये तो इंटरव्यू भी नहीं है, यहाँ तो फ्रीली आप कुछ भी बोल सकते हो. There is no fear of losing out. Then we will explain our name, our education, हाँ. post graduation, graduation, and our grade that we got in it, and then our training and internship and all the certificates that we have done, and we'll mention our work experience, the skills we are uh, good on, and that was the main thing, and that no, we should tell. Okay. And also our future objectives. So in that way. Okay. How to add value to the company? It's also in this question. Sorry. How to add the value in the company if you are very passionate about that work. Okay. Okay. Rhythm, I believe the best answer for this would be that you are aligned with the thoughts of improving yourself and starting with your education, the relevant education you begin with now. But as you go on talking about yourself, it is better to put on the things that you have made who you are, and then after that you can highlight them that these are the skills that I have learned through doing that, and after that then align your future goals with the growth of the company, and that's way it is the best way to present and tell me about yourself. I believe so. Hmm. Right. I totally agree with it. So you give a little bit information about your background, your experiences, and how they can add value to the company and the profile you are targeting. Maybe that can be a short and crisp answer, giving some information about you. And because the other party is also looking for a candidate for a certain task, so if you can just highlight uh, your experiences, your skills with respect to that task, how you can add value to that task, then it can be a good way to introduce yourself. And of course it can be a little, if you're not too sure of your how you can add value to the company and the profile, maybe you can just highlight your experience and your skill set, and then maybe a one line or a two line as to how you can contribute to the organization as a whole. ठीक है, so that can be a good way to deal with this question. ठीक है, और कौन सा फेवरेट क्वेश्चन होता है? पर्सनल क्वेश्चंस तो आई थिंक कुछ गिने चुने ही होते हैं जो आपको हर जगह दिख जाएंगे, आई एम श्योर. राइट, सो एक हमने क्वेश्चन देखा, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ वाला. और कोई फेवरेट क्वेश्चन Yes. बताओ The, बताओ. the another question is why should we hire you? हाँ, व्हाई शुड somebody hire you, इसका क्या आंसर होगा? इसमें मेन पॉइंट आपको क्या हाईलाइट करना चाहिए? You thinking about the answer to this question?
राइट, एब्सोल्युटली। ठीक है ना? तो जो टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ वाला क्वेश्चन था, उसमें अगर आप थोड़ा सा अगर जेनरिक क्वेश्चन देते हो एंड देन इफ समबडी आस्क व्हाई वी शुड हायर यू, तो वहां पर आप अपनी जो एक्सपर्टीज है उसको आप लिंक करते हो विद द प्रोफाइल, द रोल यू आर टारगेटिंग, एंड कैसे आपका एक्सपीरियंस उस रोल को वैल्यू ऐड करेगा. If you are able to explain that aspect in this particular question, I think uh, that is what they are targeting, right? एक रोल है, उस रोल के लिए आप कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हो, that is what they are asking. Why they should hire you and not somebody else, maybe with the same qualification, because maybe you have a better expertise, maybe you have better grip over the hard skills or the soft skills. You have to highlight whatever skills and background or your knowledge you have with respect to that particular domain, which can help you outstand the crowd, right? So that can be the best answer for this. और कौन सा क्वेश्चन है जो आपने एनकाउंटर किया? कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपने एनकाउंटर किया हो पर्सनल क्वेश्चंस में? How you value to the company? हाँ, वो तो सेम हो गया ना, why we should hire you or how can you add value to the company. That is a similar kind of a question. तो उसका similar answer रहेगा. What else? Ma'am, Yes, about many a this, time. Yeah. So many a times you are asked about your strengths and weaknesses, right? तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पुट क्रॉस करती हूँ, मतलब यहाँ पर अब ये वाले क्वेश्चन का आप क्या ही तो एक एक रोल मॉडल आंसर बताओगे कि दिस इज हाउ यू शुड टैकल दिस क्वेश्चन. इसमें तो आप एक्चुअल आंसर दे सकते हो कि अगर आपसे ये एक्चुअल क्वेश्चन पुट क्रॉस होता है तो व्हाट will be your answer, not what can be your answer, but what will be your answer. So if I ask what are your strengths and weaknesses, what will you say? my strengths are firstly I am always eager to learn every day something new. Okay, I am always motivated to work hard, and I am okay. gaining knowledge in my domain every day What is your domain? in the finance field. Okay. So you are hungry to learn, you are improving every day, and what else did you say? Domain knowledge every day. Acha, so these are your uh, strengths, right? Yes, ma'am. What about your weaknesses? I am lacking in communication and presentation part. I am losing in the English speaking. Okay, and what are you doing to improve it? To improve that, I have to put the weekly targets to myself, and we have to achieve that way to improve my Like for communication, example, presentation. what kind of targets? We have to. I have to put some particular target like I have to improve this area of my the weakness are there. We have to improve our writing skills and verbal and non-verbal part also. Okay, so you're working on your weaknesses. Yes, ma'am. Okay, that's great. ठीक है, thanks Rizal for your answer. ठीक है. Who else would like to answer this question? I'm sure इस question का तो answer बहुत conveniently without giving much thought सब लोग दे ही सकते हैं. So who would like to answer this one? Or should I pick randomly? मैम मैम वीकनेस की जहाँ तक बात है तो हाँ. बहुत सोच समझ के बोलना होगा, क्योंकि हम ऐसा वीकनेस नहीं बोल सकते जो सामने वाले को
मतलब हमारा इंटरव्यू हैम्पर कर सके। जैसे हम अगर एक हाँ कम्युनिकेट को, जैसे आप बात करें कि हम मेरा कम्युनिकेशन स्किल कमजोर है या मेरा हाँ कम्युनिकेशन स्किल कमजोर है, तो ये हम नहीं बोल सकते, ये हमारा पूरा इंटरव्यू हम्म हैम्पर कर दिया। इस बिल्कुल और हम बिल्कुल छुपा भी नहीं सकते, ये भी वो लोग पकड़ लेंगे। तो इसलिए इसको हम्म बीच का कोई ऐसा बताना होगा जिससे हमारा इंटरव्यू हैम्पर ना करे उन्हें, और हमारा मेरा जेन्युइनिटी भी उन लोगों को पता रहे, ये जेन्युइन हम्म इंसान बोल रहा राइट बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट बोला संजीव, कि वी कैन नॉट बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट आवर वीकनेसेस एज वेल, लाइक रिजॉल ने बोला दैट lack of presentation and communication skills and English is a little weak, तो ये सारे चीजें आप डायरेक्टली जाकर के इंटरव्यूअर को नहीं बोल सकते। ठीक है, ये आपकी वीकनेसेस होगी, उसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन आप इस चीज को डायरेक्टली जा करके इंटरव्यूअर को बोल दोगे तो वी डोंट नो हाउ दैट पर्सन विल टेक इट, एज एन इफ द पर्सन फील है कि यार ये बंदा खुद से ही बोल रहा है प्रेजेंटेशन स्किल्स वीक है, तो फिर सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर आपके क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये चीज हम डायरेक्टली कन्वे नहीं कर सकते। ठीक है रजाउल, तो इस चीज को या तो आप कुछ डिप्लोमेटिकली प्रेजेंट करो, या फिर कोई ऐसी वीकनेस बोलो जो कि वीकनेस जैसी भी है लेकिन साउंड भी नहीं करती वैसी, एज इन लाइक I believe Rhythm that the best answer would be like I sometimes lack self-control about eating my food, so I राइट usually eat junk food. So that could also be one. राइट, समथिंग आइदर नॉट वेरी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वर्किंग। ठीक है, अब आप वेट गेन करो, इससे इससे कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को अपने काम से मतलब है। तो अगर आप कोई ऐसी वीकनेस बोलोगे जो कंपनी के काम में दिक्कत ला सकती है, तो फिर आपकी हायरिंग में भी वो दिक्कत ला सकती है। ठीक है, बट अगर आप कोई ऐसी वीकनेस बोलते हो या तो वो कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड है ही नहीं, जैसे अभी दीपांशु ने एक एग्जांपल दिया, या तो ऐसे बोल दो, या फिर अगर आप अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ अगर बोलना ही चाह रहे हो तो ऐसी चीज बोल दो कि जो कि वीकनेस जैसी हो भी और साउंड भी ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल you can say that you are very ambitious and that is your strength, but at times you can, you know, uh, go beyond boundaries also to do something very good, like for example maybe sacrifice your personal time to do something, और मतलब ठीक है, ये तो एक जस्ट रैंडम थॉट आया दिमाग में अभी। ठीक है मतलब समथिंग जिसको एक बहुत हार्डकोर वीकनेस नहीं माना जाए, आपकी प्रोफाइल को हैम्पर हो जाए, ऐसी वीकनेस नहीं होनी चाहिए कोई। ठीक है। Yes, Rhythm. So I always answer this question like somebody asked about my weakness. Then I used to say that I usually find it difficult to say no to a person who is asking for a help to me. So it sounds like a weakness, but yes, it is again a strength. Yeah, from the company's perspective. Yeah, so they will think that this person is helpful, used to help others. Right, So right. this I follow. Yes, absolutely. That is exactly how diplomatically we can deal with our weaknesses. Like I am ambitious, but I get over ambitious at times. So that may not appear a weakness to the company, because if you're getting over ambitious about your work, then that is only going to contribute to the company, maybe hamper your health, maybe hamper your family time, but it will contribute to the company. So it may appear to be a weakness, at the same time from company's perspective it may be a strength. इस टाइप की चीजें आपने यहाँ पर बोलनी है, rather than saying something which is a very hardcore weakness of yours. Nobody
nobody should do that. ठीक है, वो सब थोड़ा theoretically अच्छा लगता है कि हम बहुत ज्यादा honest हो जाए. Honesty is good, but we need a little bit of diplomacy also to survive, right? So वो चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए इस क्वेश्चन में. ठीक है जी. Any other personal question? Strengths and weaknesses के अलावा we've talked about 3 personal questions right now. और कोई क्वेश्चन आता है किसी के दिमाग में? Another question which comes to my mind is, where do you see yourself? Where do you see yourself in 5 years? ये आया है क्वेश्चन आपको कभी? यस. तो इस क्वेश्चन का क्या बेस्ट आंसर हो सकता है? Ma'am, in the topmost position of your company and for which you are going to hire me. अच्छा, okay, that is very ambitious. That is a good answer, I would say. That is a good one, Sanjeev. Rhythm, actually, I do have an answer for that. I believe that Right. like you can just divide your 5 years in the part of like 2 years. So you can say like for the first 2 years, I would love to become the subject matter expert on the projects and try helping out my colleagues about with their projects and all. And after that 2 years, I would love to be in the leadership position and then want to lead those projects on which I have gained experience, and that's how I would love to lead the company after the 4 and 5 years. I believe that could be a good answer. Right. That is absolutely a good answer for this one. So a good answer for such a question can be which shows your eagerness to learn, grow, and contribute to the organization. ठीक है. Ideally कोई भी organization आपसे ये नहीं सुनना चाहेगी कि आप you know 5 साल में मे भी organization में हो ही ना. ठीक है. अब what can be the honest answer for this question? Honest answer can be that you are in some better company with some better profile, better package, or maybe somebody has plans to start their business and is saving for that. Maybe somebody wants to do some other venture or anything. कुछ भी हो सकता है, right? Not specific to the company, because 5 years is a good time frame. 5 year, in every 5 years, I think life can change a lot. So you may have a lot of goals, yeah, professional goals only beyond the company itself. But yeah, if you link it with the company, it's always better. उससे कंपनी को ये पता चलता है कि यू आर हेयर, यू आर लुकिंग लॉन्ग टर्म इनटू द कंपनी. यू आर नॉट जस्ट हेयर for some time. You are looking to stay with the company for 5 years. And जैसे कि आपने दीपांशु ने भी काफी अच्छा आंसर दिया that how initially he can contribute as a team member and then as a team leader and other leadership positions. So that can be a very good answer for this one. Although honest answer फिर different हो सकता है, but again you have to relate it with the company, so the company can look at your intent, that you have an intent to stay with the company. So if company is hiring you today, investing time with you, then it's worth it, because you will be an asset to the company for a good future, not just 1 or 2 years, but some good time of your professional career, right? So that is good enough. और कोई क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता हो? एक और आया तो था मेरे दिमाग में, which is very much relatable.
हाँ जी। One question is, what are your salary expectations? हाँ, वो तो देखो है, वो तो रहेगा ही, बट वो जनरली थोड़ा बाद में होता है. First you clear these rounds wherein technical and personal questions are asked, then वो HR round का part रहता है generally, salary negotiations. तो I believe it could be why have you left your previous company? yes, yes, ठीक है. सैलरी नेगोशिएशंस पे भी आएंगे रिजॉल्व अभी थोड़ी देर में. अभी And पहले one more question is, talk about your future goals. मतलब वो तो 5 years वाले में हो गया ना, कि आपको अपना फ्यूचर आउटलुक क्या है वो आप बता देते हो. फ्यूचर गोल से ही रिलेटेड हो गया. ठीक है. अभी What motivates you to perform better? ओके, ठीक है. एंड एक आपने बोला था व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब. ठीक है, एक ये वाला, और एक व्हाई डू यू वांट टू join this company, or why do you want to work for this company, or why do you want to work in this profile, जो भी है. ये रीजन भी बहुत ऑफन पूछा जाता है, क्यों आपने अपनी लास्ट जॉब छोड़ी एंड व्हाई यू आर कीन ऑन ज्वाइनिंग दिस कंपनी. तो ये दोनों के आंसर्स क्या हो गए, लेट्स डिस्कस वन बाय वन. तो पहले व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब, इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है. I tell you, Rhythm, this is the most difficult question in all of these. Right. Totally agreed. बट एज पर मी, अगर इंटरव्यूअर को नहीं पता कि आपकी जो करंट मतलब प्रीवियस कंपनी में क्या किस रोल पे थे, क्या प्रोसेस था, तो यू कैन से कि माय प्रोसेस वाज मींस रैम डाउन, ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि प्रोसेस नहीं था, या फिर लुकिंग फॉर अ चेंज. हाँ, ठीक है. You can always say that you're looking for a change and you have been with the company for so X number of years, and you, according to you, you have explored that company and the possibilities around your profile to the greatest extent, and now you're looking for something which can help you grow better, and you're looking for a change. Maybe you can say all that stuff, uh, and that is better than saying something like, people don't like those answers, those very honest answers. Like for example, somebody left some company because they did not like their work culture, or they did not like their boss, or they did not like somebody in the organization, or something like that. मतलब जनरली लोगों को ऐसे आंसर सुनने पसंद नहीं है. ऑल्दो इट अगेन इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि सब लोग ही उस चीज को लेकर के एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करेंगे. सम पीपल कैन बी ओपन माइंडेड टू एक्सेप्ट दैट एक्स कंपनी में बी हैविंग सम, क्योंकि बहुत बार रीजंस यही होते हैं ना. आइदर यू आर लुकिंग फॉर सम ग्रोथ, ठीक है, जितना हो सकता था उस कंपनी में आपने एक्सप्लोर कर लिया है. नाउ यू आर लुकिंग फॉर ग्रोथ, that is one big reason to change, right? And second big reason is sometimes the work culture is very pathetic in that place, uh, because the work culture is very toxic and you want some better work culture, better atmosphere for yourself. That is why you're looking for some change. And other reason can be that you basically if that can also be a situation that somebody got fired. Okay, that can also be a situation, either you left or you got fired. तो fired वाली चीज तो
मेरे हिसाब से नहीं बोलनी चाहिए unless and until it's कोविड काइंड ऑफ अ सिचुएशन, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब गई होगी, राइट? सो आई मीन ठीक है, देयर हैज टू बी अ बैलेंस। बहुत ज्यादा ऑनेस्ट भी मत हो, एकदम फैब्रिकेटेड आंसर भी मत दो कि दूसरे को पता जाए कि इट्स ऑल फैब्रिकेशंस। ठीक है, एक कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करके चलना है, एंड इट्स नॉट अ बैड आंसर अकॉर्डिंग टू me if you're just looking for some change for some good reason, maybe for some growth or better work culture, because everybody deserves that, right? I mean, if you're not getting enough growth or culture, good atmosphere in your current organization, you have the right to explore and get a better thing, right? ठीक है. Anything else if I've missed? Anybody would like to say anything on this? One more question. Yeah. That is, are you willing to travel or to relocate? Something some interviewer asked. हाँ, तो वो चीजें पूछी जा सकती है. That relocation is required as part of your joining. तो वहाँ पर of course, अब ये तो सब्जेक्टिव है. आप फाइन हो नहीं हो, जो भी हो, आप यू शुड टेल दैट थिंग. अगर इफ यू आर फाइन फॉर जॉइन रीलोकेशन एंड स्टफ, सो बता दो. नहीं हो तो भी बता दो, ठीक है ना? Okay, so the next question was, why do you want to join this company? Why do you want to work with our company? Salary hikes. Salary hikes. Reason for leaving the company. उसका reason बोल रहे हो ना, या joining का बोल रहे हो? Yes, leaving. Leaving, right, right. Okay, and if we talk about joining, why do you want to join? उसका क्या बोलोगे? क्योंकि ये भी आई थिंक ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में आपसे पूछा ही जाता है. Why do you want to join this company? Why do you want to work for our I company? think because we should say, I think that it's my dream job for your to work in your company, Mm-hmm. so I can work passionately about in your domain. So I want to join your. Okay. So you are saying that you can tell that it's your dream job and therefore you want to join it, right? Okay. Okay. और क्या आंसर हो सकता है इसका? Ma'am, I want to join this company because I found where I can explore my ability and make myself in the top positions and all that. Okay. Fine. That is also fine. You want to learn and grow with the company and reach the top positions of the company. That's what you said? Yes, ma'am. Okay, that's great. और क्या आंसर हो सकता है? और बताओ, इसका बहुत पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं. And work culture environment is very good in our company. We should say. सॉरी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही Work थी. culture environment is very good.
Work culture is very good. How do you know you haven't worked with the company yet? I You've think heard about it. some person some person has shared some experiences to me, Mm-hmm. so I can know the company. Okay. ठीक है. So because you've heard that the company has a good work culture. ठीक है. What else? और कोई आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? No other possible answer for this one. मतलब either you're looking for a better culture as you've heard about it, or you're looking to learn and grow with the company, or you've heard about the company's X thing. Those are the possible answers. और कुछ नहीं हो सकता इसमें. ठीक है. साउंड्स गुड इनफ. थोड़ी सी कंपनी की तारीफ करनी होगी आपको. थोड़ा सा कंपनी के बारे में अगर पता हो यहाँ पर, स्पेशली आपसे आपके डिपार्टमेंट या आपके डोमेन से रिलेटेड अगर कोई आपके पास एक्स्ट्रा कुछ इंसाइट्स है तो दिस इज द टाइम टू शो देम ऑफ. ठीक है. तो थोड़ा सा कंपनी की तारीफ यहाँ पर आप कर सकते हैं. एंड आई थिंक या दैट वुड बी गुड इनफ. बाकी तो आपने बोल ही दिया. ओके. सो और कोई पर्सनल क्वेश्चन है क्या जो रह गया हो हमारा? Tell me about the challenge or conflict you have faced at work and how you deal with it. That is another interesting question. Some challenge you faced and how you over how you overcame. Yeah. How, or challenges or conflict. हम्म. ठीक है जी. इसका क्या आंसर दोगे आप? Any basically difficult situation that you have faced in your past and how you overcame that situation. That is the question. So what can be the possible answer for this one? Hmm? What will the possible answer for this one? This you can say from your experience itself. Any situation, any difficult situation that you have faced and how you overcame that situation. I'm sure इसका आंसर सभी के पास कुछ ना कुछ तो होगा ही.
Yes, everyone. Are you guys thinking about the answer? Ma'am, Yes. if he or she was a fragile, how should we answer this question? Situation तो कहीं भी आ सकती है ना. It does not has to be related to your work environment. It can be related to your life in general. Some hard situation that you uh, encountered in your studies maybe, or in your personal life or your professional life. कहीं पर भी रही हो जिसको आपने फेस किया हो, any challenging situation and how you overcame it. You can talk about that stuff. Waiting for your answers, guys. Not in mind as such. So, are we saying that we never faced any challenging situation? No, we faced it. Means I faced it. Everyone faced it, but it depends on situation. Like I appeared for an interview a few months back, 2 3 months Mm-hmm. ago, and it was like situational. Like they asked me that you are in a team and you want to impose your ideas on your team members, and but they are not ready to. They're not willing to accept your thoughts. How will you make them agree to your perspective? Mm-hmm. So I was not very good at answering this. But I tried it that I'll make them understand. I'll means I had no better answers to it. So I find it difficult whenever somebody talk about situation or these real world questions. I find it difficult to answer. Mm-hmm. Ma'am, how to convince in a work culture is very different, very difficult. I think how to How convince, to what? how to convince someone in a work in a company. Okay. Hmm. So that's true that in our professional life or any other domain of our life, we face such situations where the situation is not very comforting, or it is challenging as such. Now, we if such a question comes up in the interview, we don't have to think about the most difficult situation that we ever faced. Rather, we can just think about some situation in which we were able to overcome whatever challenges were there. ठीक है. um, तो
कोई तो ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर कि चैलेंज भी रहा होगा और आपने उसको ओवरकम भी कर लिया होगा। हमें सिर्फ ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करनी है। ऐसी सिचुएशन ऑफ कोर्स हमारे पास रहती है जिसमें कि हम ओवरकम नहीं कर पाए थे, वी डोंट नो द आंसर, राइट। तो हमें उसके बारे में नहीं बात करनी यहाँ पर जहां पर we don't know the answer, we were not able to overcome. Rather, we will talk about a situation which was a little hard also, and yet we were able to overcome it. बहुत ज्यादा हार्ड नहीं भी थी, हमारा ओवरकम करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई तो ऐसी सिचुएशन होगी जो थोड़ी बहुत हार्ड हो लेकिन आपने ओवरकम कर ली हो उससे, जिसके बारे में आप बात कर सको। कोई भी सिचुएशन नहीं है ऐसी? एनीबडी? कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट, इट डज नॉट हैव टू बी स्पेसिफिक टू योर प्रोफेशनल लाइफ unless and until the other person states that any challenging situation you faced in your professional life. अगर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक टू योर प्रोफेशनल वर्ल्ड। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एनी चैलेंजिंग सिचुएशन दैट यू हैव एवर फेस्ड इन योर लाइफ एंड हाउ यू ओवरकेम इट, तो वहां पे लाइफ इन जनरल पूछा जा रहा है। और लाइफ, आई एम श्योर प्रोफेशनल वर्ल्ड के शायद कुछ आंसर्स, कुछ चैलेंजेस शायद हम हो सकता है अनआंसर्ड हो, बट जनरल लाइफ में तो बहुत सारे चैलेंजेस हो गए जो आपने फेस भी करे होगे, ओवरकम भी करे होगे, जो कि शेयर करने लायक भी है। तो उनके बारे में भी आप बात कर सकते हो यहाँ पर। Nothing, guys? No inputs from your side? Ma'am, Yeah. I have challenge in the public speaking domain. I am not good at the public speaking. This is my challenge. And how you overcame it? I overcame through practice and practice to someone to go into a silent place and talk to myself and loudly, Okay. loudly talk. But this answer seems to be more like your weakness and how you overcame your weakness rather than a situation that you faced which was challenging and you overcame it. Getting the difference between the two, क्योंकि weakness पे already आपको एक question पूछा जा चुका है, तो आपकी weaknesses के बारे में यहाँ पर आपने नहीं बात करनी है, बल्कि एक situation जो challenging थी उसमें आपने कैसे डील किया उस सिचुएशन को, उसके बारे में बात करनी है। There is a slight difference between the two. No, no inputs from anybody. देखो, जहां तक प्रोफेशनल लाइफ चैलेंजेस की बात है, जैसे कि आपने बोला था, शिवांगी ने भी पुट क्रॉस किया था, आई थिंक यही पॉइंट था ना शिवांगी आपका, दैट यू वर नॉट एबल टू कन्विंस इन योर प्रोफेशनल लाइफ। तो Yes. हाँ, तो अब देखो, वेर एवर पीपल आर इन्वॉल्व, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली है जो कि फ्रस्ट्रेटिंग, चैलेंजिंग हो सकती है एट टाइम्स। Like, you know that you are making sense, you know that you are speaking logic, but somebody in your team or your senior
is not interested to listening to your logic because that person has a big ego to satisfy, right? And is not ready to listen to you. Now, this is a challenging situation. Now, if that person has power over you, that person is your senior, that person has some authority over you as far as your professional ladder is concerned, आप क्या कर लोगे उसका? If you try to, you know, change the other person, it's actually next to impossible to change somebody. ठीक है? You cannot even change somebody in your family. How can you change some ex person in your organization? अब उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो अपब्रिंगिंग है, उसका जो ईगो है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते. So what best you can do in such a situation? What best can you do? If I ask you, if you're in such a situation, what best can you do? You can't change the other person that we've accepted, right? अब उसको अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लॉजिकल बातें करनी है तो वो करेगा. एंड जो भी उसके बेसिकली जो भी बटरिंग वाला क्राउड है वो यस सर करेगा. आप बटरिंग वाले क्राउड में नहीं हो. आप नो बोल रहे हो टू समथिंग विच एवरीबडी इज सेइंग यस टू. ठीक है, अगर चलो आपने बोल भी दिया कि चलो भाई आपने डिसएग्री कर दिया, दूसरे पर्सन ने, एवरीबडी वाज अग्रीइंग, यू स्टिल हैड द करेज टू डिसएग्री. अब ये चीज अगर आप अपने अपने फ्यूचर एम्प्लॉयर को बोलते हो तो फ्यूचर एम्प्लॉयर में थिंक ऑफ यू एज अ रिबेल. ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो पुराना एम्प्लॉयर है उस सिचुएशन में भी अगर आपने एक्चुअल में ऐसा कर भी दिया है कि बाकी सब यस बोल रहे थे, आपने नो बोल भी दिया है, दैट विल नॉट बी द एंड ऑफ इट. दैट विल हर्ट दैट एक्स पर्सन ईगो सो मच कि वो फिर आपके लिए और चैलेंजेस खड़े करेगा. फालतू की काम आपको अलॉट किए जाएंगे जस्ट जस्ट टू सेटिस्फाई दैट पर्सनस ईगो. इन चीजों का क्या सॉल्यूशन है कुछ सॉल्यूशन है, कोई एंड? इन चीजों का नहीं है. तो अगर ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जो आ जाता है जिसमें आप एक्चुअल अपने पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बारे में जो है सोच के नहीं उसको एक्सप्लेन कर पा रहे, तो मे बी you can look for somebody else's experience examples or you can just create one. ठीक है, कभी कभी वो भी आपको करना पड़ सकता है for a good answer. अब आप ये चीज जा करके ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन को आप समझा तो दोगे, चैलेंज था आपके पास, बट इसको ओवरकम करने के लिए आपने क्या किया, इस चीज का कोई आंसर नहीं निकल पाएगा जो कि इम्प्रेसिव भी हो फ्रॉम योर फ्यूचर एम्प्लॉयर परस्पेक्टिव, राइट? यहाँ पर आप कुछ सिंपलर सिचुएशन जो शायद आपके साथ ना हुई हो, ठीक है, बट थोड़ी सी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, थोड़ा सा आपका फ्लेवर ऑफ ओवरकमिंग है, इसी कुछ फैब्रिकेट करके भी तो आप बता ही सकते हो ना. ठीक है, थोड़ी सिंपलर सिचुएशन. आई एम श्योर बहुत सारी सिंपलर चैलेंजिंग सिचुएशंस होगी जो आपने ओवरकम भी करी होगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपकी जो है मैनेजमेंट में चेंजेस आ गए थे जिसकी वजह से होल ऑर्गेनाइजेशन वाज डिस्टरप्टेड and you were your team leader and you had to take care
of your team and the all lot of responsibilities, because the whole structure of the organization was undergoing a lot of changes, so there were a lot of disturbances. So you acted as a responsible person in that situation, took charge of the things around you, and made sure that your team members performed irrespective of whatever turmoil was going around in the organization. So that can be one situation which seemed a little under your control, where you acted responsibly to make the best out of the situation for your team and your company. So that portrays you very well. So that can be one example, right? Okay. So I hope you got some idea as to how these types of questions can be dealt with, right? अभी कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं. आई थिंक मोर और लेस ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू द पर्सनल क्वेश्चंस, राइट? कुछ और आता है किसी के दिमाग में तो यू कैन let me know. We can discuss that as well. And yes, of course, now we have to talk about this course specific questions. ठीक है, अगर आज हमारा कुछ बच जाता है ना रेज्यूमे वाला जो पॉइंट मैं बोल रही थी, देखते हैं आज कितना टाइम हमारे पास मिलता है उस चीज को टेक केयर करने के लिए. इवन इफ वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी टाइम टुडे, वी कैन टेक इट अप टुमारो. ठीक है, इट्स नॉट दैट वी आर इनटू हरी और समथिंग. एक आधी क्लास अगर एक्स्ट्रा चली जाती है तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. ठीक है, तो अभी let's talk about this course in specific, and finance and investment domain in specific जिससे related technical questions आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, so अब जब technical domain की बात आती है तो there will not be a list of 7 questions, there can be a list of 100 questions also. ठीक है, but we will try to focus upon uh, the most important ones. Okay, so let me just open your topics from where we can quote some questions with respect to your course as well. Just a minute. Okay, तो पूरा एकदम इनिशियल लेवल से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस कोर्स वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज फाइनेंशियल एनालिसिस? और हाउ डू वी डू फाइनेंशियल एनालिसिस? ठीक है, क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस या कैसे करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस? सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है. ठीक है, इफ आई पुट अक्रॉस दिस क्वेश्चन टू यू राइट नाउ, व्हाट विल बी योर पॉसिबल आंसर टू इट?
ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया? Ma'am, Yes. financial analysis means it is a process of evaluating a business performance and its projects ongoing governance and how to analyze the company's performance over the period of time Mm-hmm. in which tools we have to perform. That's the thing we have the financial analysis the whole thing about that. Right. ठीक है जी. Fair enough. और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? और another question can be golden accounting equation. What is the golden accounting equation? Asset is equal to liability plus capital. Assets is equal to liabilities plus capital. That is true. What is accrual basis of accounting? as and when occurred. What? As in when occurred? Whenever any transaction takes place, we have to account it at that particular moment only. Right. Absolutely correct. That is very true. That's accrual basis of accounting. Then can you talk briefly about the financial statements? What all is part of what all is actually part of these financial statements? Why do we prepare them? मैम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्यों बनाते हैं स्टेटमेंट? मैम ये एक बेसिक्स है फाइनेंशियल मॉडलिंग करने के लिए, किसी कंपनी का ग्रोथ स्टाइल, ये सब. एक एक्चुअली इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू होता है बेसिकली उसको जानने के लिए, और ठीक बैलेंस है. शीट बनाते हैं कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज जानने के लिए, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं कंपनी के जो भी कैश फ्लो, ओनली कैश फ्लो हो रहा है उसको जानने के लिए, क्या कैश फ्लो हो रहा है. ठीक है. एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. Income statement to know the profitability of the company, balance sheet to know the asset liability positioning of the company, the financial health of the company, and the cash flow statement to know the cash flows, inflows and outflows of the company. ठीक है. इसके बाद what is annual report of a company? What is an annual report of a company? It is a document published by a company wherein company tells about the past performance of the company and the future plans of them. Absolutely correct. ठीक है जी. Fair enough. What is ratio analysis? What is ratio analysis?
मैम ये एक मेथड है जिसमें कंपनी का लिक्विडिटी, ऑपरेशनल इफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। ओके, कैसे एनालाइज कर सकते हैं? व्हाट इज द रेशियो? मैम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हो उसका देख करके रेशियो मतलब रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स इज कॉल्ड रेशियो। बिल्कुल ठीक बात है। A relationship between two things can be referred to as a ratio between them, and we are doing it to understand the financial health of the company. यस मैम। ठीक है, यस बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज टाइम सीरीज एनालिसिस? मैम रिगार्डिंग पास्ट ट्रेंड, कंपनी के पास्ट हम्म फाइल्स को देख करके बताओ। yes, uh, looking at the past trends of the company's performance and comparing and knowing whether the company is improving over time or deteriorating. That can be time series analysis. Very good. What is cross sectional analysis? Comparing company's performance with different organization in the same domain. Or Right, so it's basically comparing the company with its competition, its peers in the same industry, and knowing how where this company is standing, whether we are doing better than our competition or worse than our competition and stuff like that. Right? ठीक है, वो सारी चीजें आ जाती है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में। ओके, एंड most important return ratios. ROE, ROCE, profit growth, What return is ROCE? return on capital, return on equity. ROCE. No, capital employed. ROCE. Okay, and what does it tell us? Return on the capital which has been funded to the company and how much it's returning from that. Okay, and what's its formula? Formula I don't remember. Sorry. Formula ROCE का फॉर्मूला किसी को याद है? return. What is the earning before interest and taxes divided by capital employed in the company? Now, how do we calculate this capital employed? Capital employed means the equity and the borrowing part of the company. Equity and debt part both is taken in the capital. Equity and debt part can be referred to as the capital employed into the Or we company. can take the difference between the asset and current liabilities. Yeah, total asset minus current liability will also give us debt plus equity itself, and that is our capital employed. ठीक है, and that's good Ma'am, enough. Yeah. the interview asked in so many questions we have to go through the deep meaning of that, or we have to बस ऊपर ऊपर से बोलना है? जितना आपकी नॉलेज है आप उस हिसाब से बोलोगे. इफ यू हैव डीप नॉलेज अबाउट, मतलब वैसे तो प्राय अगर डीप नॉलेज है भी तो यू बी स्पेसिफिक टू योर आंसर. जितना क्वेश्चन पूछा गया उतना ही आंसर दो आप, उससे फालतू मत दो. डोंट ट्राई टू शो ऑफ. ठीक है, बाकी अगर वो आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर आप उसका आगे फर्दर आंसर दो. मैम जैसे कि हम आंसर दे रहे तो एग्जांपल के साथ दे सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल एग्जांपल दे है सकते इसके हो, थ्रू हम स्टोरी बना के थोड़ा. बिल्कुल दे सकते हैं. ठीक है, सो आरओई आरओसी हुआ. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What is dew point analysis? It is the breakdown of ROE. Mm-hmm. Okay. Why do we do it? To see different elements about like how they are performing, like asset turnover, and I believe there were two others. I can't remember them right now. Mm-hmm. So, Issues that get financial leverages. hmm. So net profit margin, financial leverage, and asset turnover, how these things are contributing towards the change in ROE, if the ROE is improving or deteriorating over time. What are the primary reasons for the same that we get to know through this DuPont analysis. ठीक है. इसके बाद uh, anything can be asked with respect to any kind of ratios for that matter. ठीक है. If I talk about solvency ratios, then why do we calculate solvency ratios and what is the most important solvency ratio and why? Why do we calculate solvency ratios? पहले तो यही question discuss कर लेते हैं. To know whether the company it is in a solvent position or not, bankruptcy position or not. Sorry, can you repeat? Whether the company is in a solvency position or not. What do we understand by solvency position? Whether Would they be able to repay the interest payment. Only the interest payment? No, ma'am, full amount, principal and interest both. Yes, principal and interest. So we want to know whether our company is in a position to repay all the long-term borrowings, all the long-term obligations or not. Okay, so that thing we get to know by calculating the solvency ratio. Now comes the next question. Which is the most important solvency ratios? Which are the most important solvency ratios? Interest coverage ratio. Okay. How do we calculate it? Interest expense divided by EB earning before. I don't know. Interest हम include नहीं करते हैं उसमें, but profit उसमें calculation reduction होता रहता है. I'm sorry, I couldn't recall right now. It's basically EBIT upon interest expense. EBIT being the earnings before interest and tax, that indicates the earnings which are there from which interest expense will be paid off divided by the interest expense. So this whole equation lets us know whether we have enough in earnings to repay our interest, to pay off our interest or not. So that's interest coverage ratio that we calculate in order to understand that we have enough earnings to take care of our interest expense or not. Apart from interest coverage ratio, any other important solvency ratio that we can talk about? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अलावा कोई और सॉल्वेंसी रेशियो? व्हाट अबाउट डेट टू इक्विटी रेशियो? डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत कॉमनली हम कैलकुलेट करते हैं. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डेट टू इक्विटी रेशियो? व्हाई डू वी कैलकुलेट इट? debt to equity ratio means the comparing the two terms, the debt upon the equity. We should whether the company is in a no debt position or not in a debt position.
whether it is taking debt more or not. If So the in order to debt understand, if the debt to equity ratio is higher, then the company is in a very critical situation. hmm so it's basically it tells us about the capital structure of the company and whether we are too much dependent on debt or not, right? Okay. After this, you have to be at par with all the ratios. किसी भी रेशियो पे आपके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? इसके बाद the other category is of something related to Excel. If we talk about Excel में what do we understand by the term cell referencing and cell freezing? मैम सेल रेफरेंसिंग मतलब कोई एक पर्टिकुलर सेल से हमें वो कोई क्वांटिटी लेना है, लेकिन हम टाइप नहीं करना है, बस वो सेल को करेक्ट करना है, उसे सेल हाँ रेफरेंसिंग करना है। और सेल फ्रीजिंग का मतलब कोई एक कंटेंट किसी पर्टिकुलर टैब में है और उसको उसी को यूज करना है, तो उसको सेल फ्रीज करना पड़ता है पहले, तो उसी को सेल फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है जी। So if we want to freeze a cell, that is freeze the information in a cell. We don't want the cell to be changed when we drag it further. Then we will have to do self freezing. What is the shortcut to freeze a cell? मैम F4. वो एंड का जो साइन है, And का sign है डॉलर में। डॉलर, हाँ डॉलर साइन। डॉलर साइन का शॉर्टकट क्या है? F4. F4। F4 से डॉलर साइन आ जाता है, दैट वी कैन यूज टू फ्रीज अ सेल। ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग डेटा टेबल? व्हाई डू वी यूज डेटा टेबल? डेटा टेबल याद है किसी को? नोबडी? क्या बात है। सो डेटा टेबल हम बनाते थे in order to do the sensitivity analysis by changing a couple of inputs of ours in order to understand how output is changing, so that we get to know how much our output is sensitive towards the changes in the inputs, and accordingly look at the best case worst case scenarios which can happen in case the assumptions change. याद आया कुछ? I mean, sensitivity analysis we do. हाँ, सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए हम डेटा टेबल यूज करते हैं। हर मॉडल में हमने लास्ट में एक डेटा टेबल यूज करते हुए सेंसिटिविटी एनालिसिस इनकॉर्पोरेट किया है।
ठीक है, डेटा टेबल क्या था, और भी बहुत सारी हमने चीजें की थी एक्सेल के विदिन ही, राइट? मैम Why do we prepare pivot tables? How does a pivot table help us? to summarize the whole the whole thing, to do the Hmm. whole table Right. in the best manner. To summarize the information according to our requirement is, that is why we use pivot tables, so that we can summarize the whole data into a table as per, which is as per our requirement, our need. Because in whole the data can be huge, and in order to compress the data into something more useful, we use pivot tables to summarize it, right? Apart from that, हमने वो भी किया था, अ, कुछ फंक्शंस और भी किए थे। एक लास्ट, मतलब आपको बेसिकली सारे फंक्शंस एंड ऑल पता होने चाहिए एक्सेल के, आई थिंक Ma'am, we दैट look up इज and H look up are very important. I think व्हाट। we look up and H look up. हाँ, वी लुकअप, एच लुकअप, बहुत सारी चीजें की थी। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको कुछ याद होगी, कुछ आप भूल गए होंगे, बट द पॉइंट इज कि एक्सेल के सारे फंक्शंस, रेशियो एनालिसिस किया तो उसके सारे रेशियोज एंड पर्पसेस एंड एवरीथिंग सब आपको याद होना चाहिए। अकाउंटिंग की है तो अकाउंटिंग भी आपको याद होनी चाहिए। फाइनेंशियल एनालिसिस किया है तो वो भी आपको याद होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिस्कशन हुई है, एनुअल रिपोर्ट की डिस्कशन हुई है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा सो दिस इज ऑल एक्सेल। अब मैं और फंक्शंस के बारे में बात नहीं कर रही, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फाइनेंशियल मॉडल? व्हाट इज अ फाइनेंशियल मॉडल? Ma'am, a structure in which we can put financial data so that we can work upon it to take financial decision. Absolutely correct. A structure in which we can put the financial data in order to make some financial decisions. So what are the various examples of situations in which we can use financial model? Applications के बारे में अगर बात करनी है तो Personal financial management, business decision, budgeting, merger acquisition. right, कोई IPO लाना है उसके लिए इस्तेमाल होता है। right, absolutely correct. ठीक है, बहुत सारी situations हो सकती है, very well said. Applications हो गई. Then if the question comes in, define the term valuation, what will be the answer for that? Ma'am, Hmm. if the interview asks this question, so randomly they ask the questions, right? So in general, how many questions they ask, because time limitation is there. We are actually discussing all the possibilities. We don't know what exactly they'll ask. They will definitely ask maximum 2 or 4 or 5 questions at max. But we are here discussing all the possible questions which can be asked. Ma'am, if we go through the Fab program again, if we want to revise that again, so there is a multiple videos. So can we have only one video in which the whole things are there, so we can revise thoroughly. Um, if you want, after our course gets completed, we can have one session on that where you can ask as many doubts and everything. I would want कि चलो next weekend अपना अगर अपना सारा चीजें wind up हो जाती है तो, या फिर अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट वी आर थ्रू विद द प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू पार्ट इज लेफ्ट। तो वो सारी चीजें मीनवाइल चल रही है। मीनवाइल यू जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन रिवीजन ऑफ योर होल कोर्स। तो अभी आपके पास कपल ऑफ वीक्स तो रहेंगे, तो कपल ऑफ वीक्स में अगर आप पूरा कोर्स एक बारी को रिवाइज कर लेते हो तो
next to next weekend, Saturday or Sunday, whatever the case may be, we can have a class जहाँ पर कि आपके सारे जितने भी पूरे कोर्स रिलेटेड जो भी छोटे बड़े डाउट्स हैं वो सब भी हम टेकअप कर ले। एंड सेकेंडली जो आप कह रहे हो कि पूरे कोर्स में इतनी सारी चीजें हैं, तो अगर एक उसका एक समरी एक सेशन मिल जाए जहाँ पर कि सारे के सारे जितने भी, जैसे यहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, आई एम श्योर कुछ पॉइंट्स याद हो गए आपको, कुछ पॉइंट्स आपको याद नहीं हो गए, तो वी कैन डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस होल प्रोग्राम where I can summarize the whole program in one session. So do you want to have such doubt and summary session for you? Do you want me to have such session? Yes, ma'am. Okay, ठीक है, तो एक लास्ट सेशन आफ्टर योर इंटरव्यूज एंड प्रेजेंटेशंस गेट ओवर, आप अभी से अपनी थोड़ी स्टडी स्टार्ट कर दो, ठीक है? जितना भी अभी तक आपने सीखा है इस प्रोग्राम में उसको एक बार रिवाइज करना आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो सेशन उतना ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा अगर आप रिवाइज करके आओगे। मतलब अगर आप बिल्कुल रिवीजन के बिना होगे तो आपके पास डाउट्स भी नहीं होंगे पूछने के लिए, एंड आप कुछ चीजों से रिलेट शायद ना कर पाओ क्योंकि आप भूल चुके हो उन्हें। तो बेटर रहेगा कि मतलब चाहे बहुत ज्यादा डेप्थ में जा करके नहीं, लेकिन एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट आप एक बारी को रिवाइज कर लो पूरा प्रोग्राम। तो उससे क्या होगा ना कि आप डाउट्स भी पूछ पाओगे, और फिर जो भी मैं समराइज या डिस्कशन करूंगी तो उससे आप काफी हद तक रिलेट कर पाओगे अच्छे से। तो आप अपनी तरफ से अपना स्टडी शुरू कर दो, 2 वीक्स आराम से लो, अच्छे से स्टडी करो, प्रेजेंटेशंस बनाओ, एंड देन वील हैव दिस सेशन टू वाइंड अप योर होल प्रोग्राम एज वेल, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पर आ रखा है विच आई मिस्ड, हाउ डू यू रेट योर सेल्फ ऑन एक्सेल आउट ऑफ 10? ओके, सो इसका आंसर तो आपका totally dependent upon how much confident you are about your Excel skills, उस पे डिपेंडेंट रहेगा। Ma'am, यस, if we go in a, if we hire as a fresher in the starting point in the company, so they can give some training. या So what are the trainings in maybe like which see, that training can be comprised of two things. Sometimes they want you to be equipped with the technical aspects, जैसे अभी आप ऑलरेडी काफी सारी टेक्निकलिटीज ऑफ द फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट डोमेन सीख करके इसी प्रोग्राम में जा रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा हार्डकोर वहां पर, अगर रिलेटेड प्रोफाइल में आप जाते हो तो वहां पर आपको बहुत हार्डकोर ट्रेनिंग्स की इस पर्टिकुलर डोमेन में रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन आपको फिर भी कुछ ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, क्योंकि मेनी अ टाइम्स कंपनी अपने हिसाब से काम करती है कि उसके यहाँ पे कैसे काम होता है एंड स्टफ लाइक दैट, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड ट्रेनिंग तो फॉर श्योर रहेगी रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल ट्रेनिंग्स भी रहती है इन केस दे आर हायरिंग जस्ट फ्रेशर्स एंड स्टफ, तो डेफिनेटली they help their employees undergo trainings before they can actually do the task. मैम एक चीज पूछना था, जैसे कि जो हमने फाइनेंशियल मॉडल पढ़ा, मॉडलिंग पूरा तैयार करना किया, तो क्या ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें वो फिर से प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि वो इंटरव्यू में टेक्निकल राउंड में हमें क्या मॉडल बना के दे सकते हैं, बनाने के लिए दे सकते हैं क्या वो? उस टाइम के विद इन आपको ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा कि अभी के अभी बना के दो, लेकिन हाँ आपको ऐसा बोला जा सकता है कि आपको ये मॉडल मेल कर दिया जाएगा एंड बाय दिस डेट यू हैव टू सबमिट अ मॉडल, तो ये चीज काफी कंपनीज कर देती है। आपको कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन दे देंगे वो लोग और उसके ऊपर मॉडल बना के आपको उनको मेल करना होगा, दैट कैन बी अ सिचुएशन। एंड बहुत जगह पे देखी है, स्पेशली जहाँ पर वैल्यूएशंस एंड ऑल रिलेटेड टास्क होता है, इवन फाइनेंशियल एनालिसिस रिलेटेड होता है, तो वहाँ पर वो कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए बोल देते हैं, और अगर वैल्यूएशंस रिलेटेड है तो आपको
वैल्यूएशन करने के लिए बोल देंगे, प्रोजेक्ट एनालिसिस रिलेटेड है तो वो आपको प्रोजेक्ट एनालिसिस रिलेटेड फाइनेंशियल मॉडल बनाने को बोल देंगे। लेकिन ये सब कुछ आपको करने के लिए दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि ऑन द स्पॉट करना होता है आपको, ठीक है। मैम मतलब ऑन द स्पॉट जो टेक्निकल राउंड होती है उसमें सिर्फ ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। हाँ, वो आपसे पूछेंगे, चीजें पूछेंगे, आप करने के लिए कुछ नहीं देंगे। करने को आपको वो जैसे पूरा मॉडल वगैरह बनाना, क्योंकि इट्स नॉट टास्क जो कि आप हाफ एन आवर में भी निपटा सकते हो। यू नीड सम टाइम एंड स्पेस फॉर दैट। तो वो वाले जो काम है वो आपको जो है अपने एंड पे करने के लिए देते हैं, ऑन द स्पॉट नहीं करने के लिए देते हैं। ओके। अच्छा, इसके अलावा देर कैन बी मेनी क्वेश्चंस। अभी वी हैव सम लिमिटेड टाइम लेफ्ट, तो एक दो और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देर कैन बी क्वेश्चन ऑन मे बी what is the difference between private equity investment versus public equity investment? Difference between public equity and private equity investment? Ma'am, Yeah. in private equity, when the company is in growing stage and seed stage, the investors have put the money into the company, like angel investors, venture capitalists, private equity Mm-hmm. investors. They put the money Mm-hmm. into the company for a long period of time. Right. And if you talk about the public company, where the company going when the startup is coming out for an IPO, general public bids and bids Mm-hmm. on the price, the fundraising part of the company. Right. ठीक है, तो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, जहां पर आपने एक स्टार्टअप में, एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो कि लिस्टेड नहीं है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। बट व्हेन इट कम्स टू अ पब्लिक कंपनी, वी आर इन्वेस्टिंग इनटू अ कंपनी which is listed on the stock exchange, which is a public company, a company whose shares can be purchased by the public in general as well. ठीक है, so that is the scene here. Okay, and another question that can be, you know, what is DCF? DCF क्या होता है? Ma'am, hello. Yes, yes. Ma'am, excuse me for the disturbance, ma'am. Actually, attendance हो गया क्या? हाँ, attendance हो गया है. Yeah, ma'am. Actually, I was at the office, so that's why I didn't. Okay, Ma'am, did you mark me present or absent? let me just check. Uh, Bino, right? Yeah, yes, ma'am. I have marked you present only today. Yeah, yeah, okay, ma'am. Okay. Thank you. Okay. Yeah. So last question for today. ठीक है, DCF क्या होता है? DCF फटाफट से बता दो. Last question for today. It is Discounted cash flow. We discount the future value to the present. To get why the do we value. do it? To get know about the present value of that amount. So that how is it helpful? The present value of a future amount, how is it helpful to us? Know the real value of a company, the present position. Right. So अच्छा, valuation define कर दिया था आपने. What is valuation?
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी तो आज तो आपने जितने आंसर्स देने थे दे दिए, लिमिटेड टाइम में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकते थे हमने कर लिए। बाकी नेक्स्ट वीकेंड आपका प्रॉपर मॉक इंटरव्यू होने वाला है, 1 by 1 आपका सेपरेट इंटरव्यू मैं कंडक्ट करूंगी, एंड उसमें फिर आपका पर्सनल क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे, एंड फिर आपका एक उसके बेसिस पे मैं एक स्कोर कार्ड भी प्रिपेयर करूंगी बेस्ड अपॉन हाउ यू वेल यू आंसर्ड योर पर्सनल एंड टेक्निकल क्वेश्चंस, एंड आई विल शेयर दैट स्कोर कार्ड विद यू, एंड you know provide any feedbacks also, ठीक है। So that task we'll do next weekend. So जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस अभी हमने आज शेयर कर सकते थे वो हमने कर लिया, ठीक है। बाकी अभी कल आपकी प्रेजेंटेशंस होनी है विद रिस्पेक्ट टू इक्विटी रिसर्च, ठीक है। सो लेट्स मीट Ma'am, टुमारो। ये यस। one general question. I was read about the treasury domain and the wealth management domain. But they require a lot of experience, like 5 to 10 years of experience they require. But हाँ। like the fresher one didn't join that. So so I required the experience. So that is a very hectic domain. Lot of Don't worry too much, just get started in a related domain, and with time you can always progress. Don't stress yourself too much, just start in a related domain, and with time we figure out stuff. It's not important that we have everything figured out right away. Just get started with it and things will get on track. Okay, chalo, see you guys tomorrow then. Take care, bye bye, thank you. Okay, thanks guys, bye bye.